Hello everyone, welcome to Olympiad Junction and we are back with another video on NTSE which will bring you a step closer to your dream of becoming an NTSE scholar. So my name is Devanshu Sharma and in today's video we are going to solve the previous year paper, that is 2021 paper of NTSE Stage 2 Mental Ability. But before starting to solve the paper, let's do a quick analysis of the same. So as we can see, these are the most important topics out of which coding, decoding, arrangement puzzle and series बहुत ज़्यादा weightage लेकर आते हैं. उसके अलावा if we follow the topics, then Venn diagram, mathematical operations, direction sense, then blood relation, these are also very important if we are talking about NTSE phase 1 or phase 2. So these are the topics which we need to master in if we want to crack NTSE. So without any further delay, let's start with the first question. So this is a series ka question, and as we can see in the question it is written that we need to find out the wrong term in the series. Now let's talk about this 3. This is basically 2 square minus 1. 15 is 2 to the power 4 minus 1. This 63 is 2 to the power 6 minus 1. 129 is 2 to the power 8 plus 1. 1023 is 2 to the power 10 minus 1 and 4095 is 2 to the power 12 minus 1. So basically as we can see, this 129 should have been the wrong number in the series. Let's move on to the next question. It is basically an arrangement puzzle ka question. So it is given that Rohit is at a wedding asked to find the seating arrangement of the guests. There are 8 guests: Hudson, John, Azhar, Sunita, Amber, Rajesh, Mahima and Vishal, who are supposed to sit in 2 rows of 4 chairs each facing each other. So I would say कि ऐसा कुछ arrangement रहा होगा 1, 2, 3, 4 and opposite to them 4 people should be there, 1, 2, 3 and 4. Now there are some statements which are given so that we'll be able to finalize the seating arrangement. So the first statement is Amber is between Hudson and Vishal but just opposite to John. So Amber is just opposite to John and this person is between Hudson and Vishal. So now there are 2 combinations which are possible कि Hudson and Vishal can interchange their places क्योंकि तभी भी वो between का केस ही रहता है. Now second statement, Rajesh is at one end of the line and is just next to the right of John. John के just right में है. So now if I place John here, so obviously your Rajesh would be at this place because Rajesh is at one end of the row. Now third statement, Mahima, who is sitting at one end of the row, is diagonally opposite to Hudson. Now महिमा यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकती because अगर महिमा यहाँ पर प्लेस होती है तो राजेश would be diagonally opposite to महिमा. So महिमा can be either placed here or here. Now John is opposite to Amber, so Amber would be placed here और Amber is between your Vishal and Hudson, so Hudson would be placed here and Vishal would be here and finally Mahima would be placed here. Now we will be left with 2 guests, that is Azhar and Sunita. Now the vacant 2 places can be occupied by both Azhar and Sunita. We cannot finalize it क्योंकि इसके लिए कोई statement given नहीं है और हम कुछ assume नहीं कर सकते. Now let's move on to the question. Which of the following statement are definitely true? So let's see the first statement. So Vishal is just next to Amber. So that is absolutely correct. Vishal is just next to Amber. So first statement is correct. Now second statement, Azhar is just near to Vishal. Azhar is these 2 places can be occupied with Azhar. Now Azhar is just opposite or just next to Vishal. 2 केसेस हो सकते हैं, अजहर यहाँ भी आ सकता है और अजहर यहाँ भी आ सकता है. इन फर्स्ट केस अजहर वुड बी जस्ट एडजेसेंट टू विशाल, लेकिन सेकंड केस में इट विल बी ऑपोजिट टू विशाल. सो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू. थर्ड ऑप्शन, महिमा इज ईदर नेक्स्ट और ऑपोजिट टू सुनीता. सो सुनीता कैन कम एट दिस प्लेस और दिस प्लेस. नाउ सुनीता एंड दिस महिमा कैन बी, अगर सुनीता यहाँ पर आती है तो महिमा विल बी ऑपोजिट टू सुनीता और अगर सुनीता यहाँ पर आती है तो महिमा विल बी एडजेसेंट और नियर टू सुनीता. सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू.
because either of the two cases will happen for sure. And the fourth statement, Sunita is diagonally opposite to Rajesh. जरूरी नहीं है एक्चुअली, अगर सुनीता यहाँ पर है then it is diagonally opposite to Rajesh, but अगर सुनीता यहाँ पर है then it is not diagonally opposite to Rajesh, and we can say that only the first and the third statements are definitely true, and we can say that option A is the correct answer. Read the following passage and answer the questions given below. In the administrative structure of an academic institution, the highest body is the EC, Executive Council. तो सबसे बड़ा जो body है, that is EC. We'll write it down here. Now, there are Academic Program Committee, that is APC, Finance Committee, that is FC, Planning Division, that is PD, who have to report to EC. मतलब ये तीनों APC, FC and PD, all of them are reporting to EC itself. Now, the Vice Chancellor chair the APC, FC and PD, while the Chancellor chairs the EC. तो मतलब ये तीनों chair करते हैं basically Vice Chancellors, and this is the Chancellor. Now, the schools of the study, that is science, humanities, social science, commerce, education, engineering and technology, comes under the jurisdiction of APC. मतलब studies का jurisdiction APC का है. Now, the question is, the faculty members of the School of Commerce reports to. So, School of Commerce, any kind of a study will be reporting to APC. So, APC would be the correct answer. And the fourth question is also a similar one. Now, with the same paragraph, it is asking which among the following statement is correct with respect to hierarchy. Now, EC, APC and PD, we have already seen that APC, FC and PD, these are the three bodies which are constant in the hierarchy, या फिर वो same hierarchy follow करते हैं या फिर same level पे हैं. So now, as we can see that APC, PD and FC are at the same level. This is only given in the second option. So that's why option B should be the correct answer. Let's move on to the next one. अभी एक क्वेश्चन पूछता है. In the following question, 5 statements have been provided which are to be considered as true even if they are not corroborated real life experience. There are followed by 4 conclusions as the alternatives. Basically, it is a syllogism ka question. Now, the statements given are, some donuts are dumb. So I'll make a circle representing donuts. Some donuts are dumb. Now, some dumb are sweet. Some dumb are sweet. All sweet are tall. All these sweet are tall. No tall is a donut. मतलब इसके और इसके बीच में there is no connection. And finally, all donuts are sugar. All donuts are sugar can be represented like this. Right? Now, we have to see what are the conclusions which will be definitely false. यहाँ पर clearly given है. This should be definitely false. So the first statement, some sugars are sweet. So this one is sugar and this one is sweet. Now there can be an intersection between these two. तो ये possible है. False, definitely false नहीं है. So ये option हमारा गलत हुआ. Now, some dumps are tall. Some dumps are tall. Basically, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि ये तो statement is absolutely true. यहाँ पर ही दिख रहा है that some dumb are tall. तो ये भी definitely false नहीं है. Some sugars are not dumb. So, some sugar are not dumb. ऐसा कोई जरूरी नहीं है that some sugar should not be dumb. So, this is also not definitely true. And finally, some tall are dumb. So, some tall are dumb, it is given in the question, या फिर ये आपको clearly diagram में दिख रहा है that some tall are dumb. So ये भी definitely true नहीं है. Actually there are some questions in NTSE जो कि गलत तरीके से frame होते हैं और उनका कोई भी answer true नहीं रहता. This is one of those questions. No worries. Let's move on to the next question. So build is related to CAWRQ. So build is related to CAWRQ. Then we need to find out कि ऐसा similar relationship किन दो pairs में है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं U and I. These are, इनकी mirror images same होती है. मतलब reflection symmetry इसकी बदलती नहीं है.
these are symmetrical if we talk about the reflections of the same. तो जिन दो चीजों की मिरर इमेजेस सेम होती है, दे आर कॉल्ड टू बी रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक. सिमिलरली यहां पर भी A और W की रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिख रही है मुझे. सो वी नीड टू फाइंड अ सिमिलर ऑप्शन जहां पर सेकंड और थर्ड लेटर का रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिख रहा हो इन द पेयर इटसेल्फ. नाउ इन दिस वन A एंड R, A में वो सिमेट्री दिखती है लेकिन R में नहीं. सिमिलरली RO, R में नहीं आती है वो सिमेट्री. OU and RS, again R is there जहां पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती है. एंड फाइनली AU and HT, AUHT, these are all the letters which shows reflection symmetry. So that's why option D should be the correct answer. Let's move on to the next question. And an old couple with memory issues have forgotten their anniversary and were trying to recollect the date. The lady clearly remembers that they got married in the month of February 1955. The man clearly remembers that he celebrated his 21st birthday in the same year and it was a Thursday. The 3rd of February as a bachelor. मतलब अगर उसने it was Thursday, the 3rd of February as a bachelor. तो 3rd Feb 1955 इस दिन उसका बैचलर था. तो ऑब्वियसली बैचलर पार्टी शुड हैव हैपेंड बिफोर द मैरिज इटसेल्फ. सो इसके बाद ही मैरिज हुआ होगा, दैट इज फॉर श्योर. दिस इज अ थर्सडे, right? Now then the lady remembers that they definitely got married before 13th of Feb. So 13th of Feb से पहले शादी हुई है. मतलब what are the dates basically? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. These are the dates which are possible. So let's do one thing. In सबके days भी लिख लेते हैं. So 3rd was a Thursday, 4th should be a Friday, then Saturday, then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Now again one more information that the man knows it has to be a weekend since he was working on the other day from Monday to Friday. The lady and the man then agrees that it was a Sunday. तो हमें final clue मिलता है that it should be a Sunday between 3 and 13. So only one Sunday is available, that is 6th of February 1955, and we can say that finally option B should be the correct answer. Let's move on to the next question. Now read the following information carefully and answer the questions given below. There are certain coded relationships are given और हमें उसको decode करके ऐसा बताना है that V और P कैसे related है. So first of all, P multiply by Z. A multiply by Z means A is the brother of B. So it means P multiply by Z means P is the brother of Z, right? Then Z divided by D. So A divided by B means A is the son of B. So Z divided by D means Z is the son of D. So Z is the son of D. And finally D minus B. A minus B means A is the wife of B. So D minus B means D is the wife of B. D is the wife of V, so V should be the husband, and we can say that V related to P, ऐसा कुछ. So basically V should be the father of P. V should be the father of P. So that's why option D should be the correct answer. इसी से related एक और question है. Again another relationship is given. So M divided by C. So M is the son of C. Similarly C plus P. C is the mother of P, and P minus L means P is the wife of L. So P is the wife of L. Now how M related to L? तो M related to L, M की sister है P और P का husband है L. So we can say that M should be the brother-in-law of L, and similarly option
D should be the correct answer. Next question. Now, the objects or words given below form a certain group. Which one of the following does not belong to the group? Spectacles, then earrings, bicycle, shoes, bangles. अभी मुझे clearly visible है spectacles, earrings, shoes and bangles. These are wearables. इसको पहनते हैं. लेकिन bicycle is the odd one out. So obviously option A, that is option 1, should be the correct answer. Next question. There is a 3-digit code to open a lock. There are 4 3-digit numbers and hints have been provided corresponding to those numbers to crack the code. Now crack the code and mark that as your answer. अभी basically क्या बता रखा है that 821 में 1 digit is correct but wrongly placed. सिर्फ और सिर्फ एक digit सही है और वो गलत placing हुई है उसकी. Similarly 379 none of the digits are correct. एक बार देखते हैं. What are the total number of digits that we have? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now none of the digits are correct, so 3, 7 and 9 should not be there in the 3-digit number. इसको कट कर देते हैं. Now the last two things, 486, that is 2 digits are correct but wrongly placed. Similarly 538 2 digit correct है और rightly placed है. इसमें मुझे common दिख रहा है, 8 common दिख रहा है, तो 8 तो होना ही चाहिए. ठीक है, so basically 8 का करेक्ट प्लेसिंग यहीं पे है. सो 8 भी हमारे ऑप्शंस में से अभी कम हो गया. वी नीड नॉट प्लेस 8 नाउ. ओके, नाउ अब क्या देखना है? 8 यहां पर करेक्ट था. दिस वाज 821 में से 8 करेक्ट है, तो 2 और 1 शुड बी द रॉन्ग डिजिट्स. तो 2 और 1 को मैं खत्म कर देता हूं. अब देखते हैं ऑप्शन को. देखो ऑप्शन में कहीं 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो ऑब्वियसली ऑप्शन में 0 नहीं दिख रहा, तो मतलब 0 को भी काउंट मत करो. इट शुड नॉट बी इन द राइट कोड. सिमिलरली आई कैन नॉट सी 6 इन द ऑप्शन, तो 6 भी नहीं होगा. सो बेसिकली द 2 numbers और द 2 digits which are left should be 4 and 5. अभी 5 का करेक्ट प्लेसिंग है फर्स्ट प्लेस पे, तो 4 should be at this place and 548 should have been the correct answer, which is option D. Let's move on to the next one. So Rohan moves 1 kilometers to east and then turns to south and moves 5 kilometers. Direction sense का question. तो रोहन का स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से ये है, मूव्स टू ईस्ट 1 किलोमीटर, देन साउथ में इट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर्स एंड मूव्स, ही अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स. आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड मूव्स 9 किलोमीटर्स. सो बेसिकली यहां पर ऐसा करके 9 किलोमीटर्स इन टोटल. अभी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? मतलब आई नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ. So I would say कि ये जो लेंथ है that would be 1 plus 2, that is equal to 3. Similarly this length should be equal to 9 minus 5, that is 4. Let's apply Pythagoras theorem. So this should be under root of 3 square plus 4 square, which is equal to 5. So 5 kilometers should have been the correct answer. That is option C. Next question. Now दिस इज अ डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन. यहां पर आप क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं दैट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2. यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस, ओनली स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट टू आंसर, दोनों स्टेटमेंट्स का जरूरत रहेगा या फिर दोनों से भी काम नहीं चलेगा. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द डेट टुडे? ये हमें पता करना है. नाउ द स्टेटमेंट 1 सेज वी आर इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च. सेकंड वीक चल रहा है. और स्टेटमेंट 2 कहता है दैट द डेट टुडे इज एन ऑड नंबर. अभी ऐसे तो बहुत सारे डेट्स हो सकते हैं. इजंट इट लाइक अ बिट कंफ्यूजिंग कि सेकंड वीक ऑफ मार्च में ऑड नंबर मुझे चाहिए. अभी सेकंड वीक ऑफ मार्च में तो बहुत सारे ऑड नंबर्स आएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स आल्सो आई एम नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाई नीदर स्टेटमेंट 1 nor statement 2 is sufficient to answer the question. So option D should be the correct answer. Next question is also a data sufficiency. What is the 2-digit number? कौन से 2-digit number की हम बात कर रहे हैं? The first statement says that both the digits of the 2-digit number are even and the sum of their digits is 12. तो दोनों ही even है और sum है 12. देखो कम से कम छोटे से छोटा 2-digit number या बड़े से बड़ा 2-digit number क्या रख सकते हैं? 0 is the smallest. सबसे even digit जो हम रख सकते हैं that is 0 और 8. तो अगर मैंने एक जगह सबसे बड़ा रखा
तो दूसरी जगह सबसे छोटा रखना पड़ेगा. So 84 according to the first statement can be the answer. Similarly 48 can be the answer according to the first statement. फिर 66 भी हो सकता है, राइट? उसके बाद 48 भी हो सकता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है. उससे नीचे तो नहीं जा सकता मैं, 210 तो नहीं लिख सकता बिकॉज द समेशन ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 12. सेकेंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये नैरो डाउन हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट से द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर आर नॉट सेम, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया. Still, we are not able to identify a unique option or a unique answer. We have got two answers, that is 84 and 48. So we can say that neither option, neither statement 1 nor statement 2 is sufficient to answer the question. So option D again should be the correct answer. So in this question, this is a basic data sufficiency ka question. Who is the tallest among the four friends, Kimaya, Ashvi, Vihana and Pari? So statements given are Ashvi is not the tallest but taller than Vihana and Kimaya. So Ashvi should be at the second place in the decreasing order, right? Absolutely correct, because she is not the tallest. But last two places पे या तो Vihana आएगी या फिर Kimaya आएगी. So the tallest one should be Pari, and because of the first statement we are able to find out who is the tallest one. So ये statement alone sufficient है. Second statement, Vihana is the shortest among the four friends. उससे मुझे नहीं पता लगता whether Pari is the tallest one, Ashvi is the tallest one, or Kimaya is the tallest one. So we can say that option, the statement 1 alone is sufficient to answer the question. Okay, so option 1, this is the option which should be the, not this one, this is the option which should be the correct answer. 16th question, it is saying in the word pacemaking, if the first letter is interchanged with the second letter, third is interchanged with the fourth. So एक बार लिख लेते हैं, PACEMAKING. So first and second को interchange किया तो AP, थर्ड एंड फोर्थ को किया तो EC, देन AM, देन IK and finally GN. Now what do we need to do? What would be the seventh letter from the right of such arrangement? So from the right, this is the first one, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. अगर हम seventh letter from the right देखें, so the answer comes out to be C, which is option B. Next question is basically a series ka question, alphabetical series. So in the following letter series, find the letters to replace the question mark to complete the series. Okay, so first of all, I'll be using this table in this question basically. So ZXW, ZXW, right? Then VTS, VTS, ZXW, VTS, then RPO, RPO, then NLK, N से start होता है, then L, then K. अभी next क्या आना चाहिए? It is quite obvious that it should be J, H and G. तो J, H and G, that would be the option C, and finally FDC, FDC. And option C should be the correct answer, that is J, H and G. Let's move on to the next question. So a museum has an average of 520 visitors on Sunday and an average of 100 visitors on other day. So what is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday? So 30 days का month है और Sunday से begin हो रहा है, मतलब first को Sunday होगा, 8th को Sunday होगा, 15th को होगा, 22nd को होगा, then 29th को होगा. There are 5 Sundays in the month and the remaining 25 days is a non-Sunday. So on 5 of these Sundays, 520 visitors on each Sunday would be there. So it will be equal to 2600, a total of 2600 total visitors have been visited, or there was a footfall of 2600 visitors on Sundays. Now non-Sunday 25 हैं और हर दिन 100 visitors are there. So a total of 2500 visitors should be there on the remaining 25 days. And if I do the entire total, 5100 people are there. अभी एवरेज अगर मैं निकालूंगा, I need to divide it by 30, 0 and 0,
and 170 would be the correct answer, that is option B. Next question, Rishi decided to drive to a party. From his house he drove 10 kilometers north. तो यहाँ पर हाउस था, उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रैवल किया. Then he decided to pick up his friend, so he takes a left turn and drives for another 2 kilometers. यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैवल किया. On picking up his friend, he has to take a right turn and drive for another 5 kilometers. फिर यहाँ से राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया. फाइनली ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 2 किलोमीटर्स. यहाँ पर फिर 2 किलोमीटर्स ट्रैवल किया टू रीच हिज डेस्टिनेशन. दिस इज हिज डेस्टिनेशन. हाउ मेनी किलोमीटर्स ऋषि वुड हैव रिक्वायर्ड टू ड्राइव हैज ही ड्रोव स्ट्रेट टू द पार्टी फ्रॉम होम? तो ये टोटल डिस्टेंस 10 plus 5, that is 15, which would be the correct answer, that is option A. Then in a queue, Mr. X is 14th from the start. So can I say that X के आगे 13 people are there? Y is 17th from the end. So Y के पीछे 16 people are there. While Mr. Z is exactly in the middle of X and Y, Mr. X is ahead of Y. ये बहुत important information है. पहले X है, उसके बाद Y है और बीच में Z है, exactly बीच में Z है. X से ऊपर 13 people are there और Y से नीचे 16 people are there. Now there are 48 persons in total. There are 48 persons in the queue. तो अभी देखते हैं. 13 plus 1 14, 15 16 और plus 16 that is 32. तो मतलब 32 that is a total of 48 is there. तो 16 people are left. So can I say 8 and 8 यहाँ पर रहे होंगे? तो अब ये क्या पूछ रहा है? How many persons are there in between X and Z? X और Z के बीच में there are 8 people. So option C should be the correct answer. So our next question, find the next number in the series. So we have 13, then 13, 65, 585, 7605 and 129285. So the numbers are increasing rapidly. So there should be a multiplication factor in this. So let's see. So we have 13. Okay. Now 13 multiplied with 1 is equal to 13 itself. Now 13 multiplied with 5 is equal to 1. This is 65. Now 65 multiplied with 9 is equal to 585. Now 585 multiplied with 13 is equal to 7605. Now 7605 multiplied with 17 is equal to 129285, and finally this 129285 multiplied with 21 is equal to your option 4, which is 2714985, and it would be the correct answer, which is option 4. Next question. So we have a missing number question 4, then 55, 576, then a question mark means we have to find out that missing number, then 21280 and so on. So let's try to identify. So 4, we'll take the first one, multiplied with 11 added with 11 into 1 square is equal to 55. Now 55 multiplied with 9 plus 9 into 3 square, that is equal to 576. Then our 576 multiplied with 7 plus 7 into 5, sorry, this is 5 square, that is equal to 4207, and that would be the correct answer. That would be the number which is the missing one, and we can say that option B should be the correct answer. The next question, we have to complete this series, and in this series it is an alphanumeric kind of a series. So Z, we can say that Z is equal to 26 if we divide it by 2 and do a whole cube of the same, right? So this is equal to 2197. Now R is basically equal to, R we can see it is equal to 18, the table is given. So 18 divided by 2 whole cube
is equal to 9 ka cube, which is equal to 729. Similarly, your P is equal to 16 if we divide it by 2 and do a whole cube of the same. This is equal to 512, which is the whole cube of 8. And finally, J, if we talk about J, which is equal to 10 divided by 2 and do a whole cube of the same, this is equal to 5 cube, which we know that it is equal to 125, and we can say that option B should be the correct answer for this question. The next one, in this question, Sunil is the son of Anil. This is a blood relation question. So Sunil, there's a person called Sunil, which is a son of Anil. This is a son of Anil. And Shweta, Anil's sister. There is a person called Shweta who is Anil's sister. And we can encircle it because Shweta is a female, because it's a sister, has a son named Maruti and a daughter named Sita. So there is a son of Shweta, that is Maruti, right? And there is a daughter which name is Sita. Now this is a daughter, so we can encircle it, and Maruti we can keep him in a box. Okay. Now Prem is the maternal uncle of Maruti. Now Prem is the maternal uncle of Maruti. It means Prem is the brother of Shweta. So we can say that Shweta has another brother that is called Prem. And this person should be in a box. And finally, how Sunil is related to Maruti, we can say that these two people are cousins of each other, and we can say that option 1 or option A should be the correct answer. 24th question, in the given figure, the triangle represents the girls. So triangle, this represents girls. Now the square represents sports person. So sports, circle represent coaches, so this is coach, and the portion in which in the figure which represents girls are sports person but not a coach. Matlab it should be a girl, it should be a sports person but not a coach. So if we take the intersection of girls and sport, that comes out to be B and D, but we don't want the coach in the picture, so we can say that only B should be the correct answer, which is option 2, that is option B. So in this question, a dice is numbered from 1 to 6 in different ways. If 1 is adjacent to 2, 4 and 6, then which of the following statement is necessarily true? So we can solve this question with the help of a net. We will open the net of the dice. So if I place 1 at this place, then 2, 4 and 6 should be adjacent to 1. So ऐसा कुछ हो सकता है कि 2, 4 और 6 यहाँ पर कहीं आ जाए. Okay. Similarly, in the other net, if I place 1 here, then 2, 4 and 6 can take these 3 places. Okay. Then 1 here at this place, 2, 4 and 6 can take these 3 places. Okay. And the last one will be placed here, and 2, 4, 6 will be taking these 3 places. Now as we can see and as we know that if we open the dice in a net form, then the opposite faces would be alternate with each other. So अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ that in this particular dice 2 and 6 are opposite to each other because they are at alternate places, एक छोड़कर दूसरा space occupy कर रहे हैं. Now अभी किसी में भी आप देखेंगे if we talk about these two places, these are not alternate to each other, so they are not opposite. मतलब यहाँ पर भी alternate places नहीं है. I cannot see alternate places. Similarly, if I talk about these two, ये भी alternate नहीं है. And finally, these two are also adjacent. So can I say that the remaining 3 and 5 should be adjacent to each other because they cannot be opposite to each other. So that's why we can say that
option 3 should be the correct answer. 3 must be adjacent to 5. And let's move on to the next question. In this is basically called Chinese coding decoding. So in a certain code language, sun shine brightly is written as some code, houses are brightly lit written in some other code, light comes from sun in some other code, and we need to identify what is the code of sun and brightly. So now यहाँ पर ऐसा कुछ टेबल दिख रहा है आपको. अभी बेसिकली सन को अगर मैं देखूं, सन इज एट दिस प्लेस एंड अनदर यहां पर सन है. तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में क्या मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं LO and LO is common in both the sentences in the coded form? So I can say that sun is coded as LO, and similarly brightly is common in सेकेंड एंड द फर्स्ट सेंटेंस. और फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में कौन सा कोडिंग कॉमन है? दैट इज BA एंड BA हियर. Okay, so this brightly is BA, so LO and BA should have been the correct answer, which is option C. The next one, study the following figure. A person goes from A to B always moving in the right or the downwards direction. मतलब खाली एक तो right direction में जा सकता है या फिर downward direction में जा सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता. How many different routes can he adopt? सी बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन हम इसका देख सकते हैं. बेसिकली यहां से ये स्टार्ट करता है और सीधा ऐसा करके बी पे पहुंच जाता है. दिस इज द फर्स्ट वे. देन द सेकेंड वन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ऐसा करके, दिस इज द सेकेंड वे. नाउ द थर्ड वे वुड बी ही स्टार्ट्स फ्रॉम हियर देन गोज डाउनवर्ड एंड यहां से दिस इज द थर्ड वे. देन द फोर्थ वे वुड बी दिस दिस एंड दिस. Fourth way. Fifth way would be this, this and this, and the final sixth way is directly going to AB without just taking one turn, and that's why option C should be the correct answer, which is 6. Next question, we have to find out the total number of triangles in the above grid. So बहुत अच्छे से देखें. First of all, जो बहुत बड़ा सा ट्राइंगल है, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, that is one of the triangle. Then उससे छोटा कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? क्या ऐसा बोल सकता हूं? This is one of the triangle. Okay, ये एक ट्राइंगल है. Similarly, this is another triangle. And if I talk about triangles of the same shape, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया. So in total how many triangles we have got till now? There are 4 triangles that we have got. एक तो सबसे बड़ा वाला और अभी 3 ट्राइंगल और मिले. So a total of 4 triangles are there. Then उससे छोटे ट्राइंगल पे आते हैं. This is another triangle, 5. Then this one is again another triangle, 6, 7. Then let's move on to the 8th one. This is the 8th one. Then this one, which is the 9th one, and this is the 10th one. अभी 10 triangles मुझे मिल चुके हैं. Now I want to think about the smaller triangles. तो 10 triangles already there. 1, 2, 3, 4 smaller triangles. Then 5, 6, 7, 8, 9. Then 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. पहले कितने मिले थे? 10 ट्राइंगल. अभी 16 और मिल चुके हैं. So I can say that a total of 26 triangles are there. Option B, that is option 2, should be the correct answer. The next one, Kunal walks 10 kilometers north. ऐसा करके walk करता है 10 kilometers in the north direction. This is 10. Okay. Then from there he walks 6 kilometers to the south direction. यहाँ से वो 6 kilometers वापस आ जाता है. Then he walks 3 kilometers towards east. यहाँ से वो 3 kilometers east में walk करता है. And how far in which direction is he with respect to the starting point? तो एक तो पहले direction देख लेते हैं. Can I say that the direction is north east? Direction is northeast, and we can say that this length
this length I am talking about, this length is 4. 4 plus 6 is equal to 10. So if I apply Pythagoras theorem, because this is a right angle triangle, so this should be equal to the direct length between the starting and the final position is equal to 3 square plus 4 square under root, which is equal to 5. So I can say is 5 kilometers from the starting point in the direction of northeast, and option A, which is option 1, 5 kilometers, sorry, not the option 1, option D should be the correct answer, 5 kilometers northeast. Next one, in a class, 45 students study mathematics, 55 study physics, 40 students study chemistry, 30 students study math and physics, and so on. So we have to take use of a Venn diagram in this question. So first of all, this is a universal set. Okay, now we have 3 circles representing math, physics and chemistry. Okay, now it is given that यहाँ पर बहुत clearly mentioned है कि 10 students study all the 3 subjects. So this is the, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पर sorry 10 students, 10% को मैं 10 students ही बोल रहा हूँ. So 10 students would come here. Now 25% students study chemistry and mathematics. So chemistry or mathematics will come in these places. So 25, out of 25 I'll be putting 15 here. Now physics and chemistry पढ़ने वाले 15 students है, 15% students physics और chemistry, उसमें से 10 already placed हैं, तो बचा हुआ 5 मैं place कर दूँ. और now उसके बाद 30% study mathematics and physics, 30%, बचा हुआ 20 I'll place here. Now a total of 40% study chemistry. Chemistry में already 15 plus 5 plus 10 which is equal to 30 is already there, तो बचा हुआ 10 को I'll place here. Then 55% study physics, तो already 20 plus 30 plus 5 which is 35 already there, तो बचा हुआ 20 मैं यहाँ रख दूँ. And 45% study mathematics, तो उसमें से 20 plus 10 plus 15 which is equal to 45 already there, तो यहाँ पर मैं 0 ही रखूँगा ना. What percentage do not read any subject? So the number of students outside the circle would not be studying any of the subjects. So इसका total कर लेते हैं. 20 plus 20 40 plus 10 50 plus 20 70 or 10 80, and I would say कि 20 students or 20% would be outside the circle, and we can say that option D, which is 20%, should be the correct answer. Now next question. In a code language, solid is written as WPSLPIMFHA. It is a difficult one. ये एक difficult question है. If I talk about coding decoding, तो एक बार solid को लिखते हैं. Okay? So solid लिखते हैं SOLI and D. यहाँ पर एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, that let's wait, उसको देखते हैं. So WPSLPI SLPI and MFHA, MFH and A. These are the letters which are coded in terms of solid. Now solid का अगर मैं देखूँ, solid is basically S से 19 से start होता है, then O is 15 according to the table, then L is 12, I is 9 and D is 4. Similarly, we will code the words. W is basically 23, P is 16, S is 19, L is basically equal to 12, P is again 16, I is 9, M 13, then your F is basically equal to 6, H is equal to 8 and A 1. अभी कुछ रिलेशन आई एम एबल टू सी. 19 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 4 तो 23 दिखता है, ऐड 4 तो 23 दिखता है, और -3 करूंगा तो 16 दिखता है. नाउ सिमिलरली 15 में ऐड 4 करूंगा तो मुझे 19 दिखता है, और -3 करूंगा तो मुझे 12 दिखता है. आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. तो मतलब पहला लेटर आता है +4 करने से और दूसरा लेटर आता है -3 करने से. नाउ व्हाट इज द कोड फॉर ATEXXQ? लिख लेते हैं इसको. सो बेसिकली ATEXXQ IBVO
V and O. Now, A is 1, T is basically equal to 20, then E is 5, X written as 24 twice, then Q is basically 17, I is 9, then this is B which is 2, V is equal to 22 and O is 15. तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सब का एक पेयर बनने वाला है, इन दोनों का, देन इन दोनों का, देन इन दोनों का, these two will become a pair, these two will become a pair and so on. अभी यहां पर A को मैं -4 करूंगा, तो A में -4 करूंगा, A से 4 पहले जाऊंगा, A से 1 पहले जाता हूं तो मुझे Z दिखता है, देन Y दिखता है 2 पहले, 3 and 4, तो I'll be able to find out W. Then E से 4 पहले that is A, X से 4 पहले that is T, I से 4 पहले that is E, V से 4 पहले that is R. So we are able to say that water should be the correct word जिसका कोड आपको given है which is this one, and option D should be the correct answer for that. Below are the depicted the 3 different positions of a dice. Find the number opposite to one dot. यहाँ पर just look at the first and the third dice. As we can see, 2 is in both the dices and exactly at the same position. जब भी ऐसा कुछ हो तो आप बचे हुए positions को directly opposite कह सकते हो. For example, यहाँ पर 3 है on the left hand side और top पे 1 है. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है और टॉप पे 6 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट 3 इज ऑपोजिट टू 5, 1 is opposite to 6 and the remaining 2 should be opposite to 4. As simple as that. तो यहाँ पर 1 के opposite पूछा है तो 6 should be the correct answer which is option D. Next question. The reasoning power and logical power of 6 students in a class are as follows. Ruchi is more logical and have higher reasoning power than Puchi but less logical and reasoning power than Sri. तो यहाँ पर देखो दो चीजें देख सकते हैं हम. एक तो पहला चीज कि we are talking about reasoning and logical power. तो पहले तो we'll write down logical and then reasoning. Okay. Now these are the two columns. Now first of all we need to identify कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर. तो first one is Ruchi, then we have Puchi, then Sri is also there, then Nichi, Chiki, and finally we have one more, I think that is Ricky. So there are 6 kids, right? अभी यहाँ पर इसको एंड करते हैं और विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट कैन फॉर्म. यहाँ पर जस्ट टू डिफरेंशिएट बेसिकली ऐसा करके वी कैन ड्रॉ द लाइंस. ओके, ऑलवेज ड्रॉ द लाइंस टू डिफरेंशिएट डिफरेंट वेरिएबल्स, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक लूप में फंस जाओगे. ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल Ruchi is more logical and have higher reasoning power than Puchi but less logical and reasoning power than Sri. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो Sri है, Sri is more logical than Ruchi and Ruchi is more logical than Puchi, and same goes for reasoning as well. Sri is more logical than Ruchi and Ruchi is more logical than Sri. Second statement, Nichi is more logical than Chiki but who is not as logical as Puchi. So basically Nichi is more logical than Chiki who is not as logical as Puchi. So basically Puchi is also more logical than Chiki, right? Third statement, the least logical student has highest reasoning power. इसको एक बार रखते हैं हमारे पास. Okay, the third and the fourth statements let keep it with us, उसको बाद में देखते हैं. Fifth statement, Nichi has lower reasoning power than Ricky. तो Nichi has lower reasoning power than Ricky. There is another person which is Ricky. This is not Ruchi, but higher than Chiki. But higher than Chiki, having better reasoning power than Sri. Having better reasoning power than Sri. So can I say कि reasoning power का मेरा पूरा ready है, क्योंकि Ricky सबसे ज़्यादा reasoning power लेकर बैठती हैं, तो Ricky should be at the first place, then Nichi that is at the second place, then Chiki would be at the third place, then there would be Sri at the fourth place,
then Ruchi, and finally Ruchi, and finally this one is Puchi. Okay, then Ruchi and finally Puchi, which is this is the fifth one and this would be the sixth one. Now थर्ड स्टेटमेंट, लीस्ट लॉजिकल पर्सन हैज हाईएस्ट रीजनिंग पावर. तो जिसका हाईएस्ट रीजनिंग पावर है वो लीस्ट लॉजिकल है, मतलब रिकी शुड बी लीस्ट लॉजिकल. द स्टूडेंट हैविंग द लीस्ट रीजनिंग पावर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पुची, would be fourth if they all stood in a queue according to their logical power and queue started from highest logical student. So Sri would be the fourth one in the queue, right? Now these are some of the things which have been given to us. Now यहाँ से मुझे कुछ और भी पता लगता है that Chiki is the least logical one after Ricky. So Chiki should be at the fifth place. But we are still confused between Ricky, Puchi and Nichi. So these are the three people which we are not able to place. So let's move on to the question. Find the following statement. Which of the following statement is correct? So Nichi has the highest reasoning power in the group. Nichi is the second one. So ये गलत हुआ. ऑप्शन बी, पुची इज मोस्ट लॉजिकल इन द ग्रुप. मोस्ट लॉजिकल तो अभी तक हमें पता ही नहीं है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. द थर्ड स्टेटमेंट, रुचि हैज हायर रीजनिंग पावर देन निची. सो रुचि का रीजनिंग पावर है 5 एंड निची का रीजनिंग पावर है 2, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. Ricky has least logical power, so Ricky has least logical power, have been placed at the 6th place, so we can say that option D is the correct answer. Next question which is related to the same thing. तो अगर मैं देखूंगा whose position in the logical power queue cannot be determined from the given statement, तो यहाँ पर मुझे दिखा था that रुचि, पुची and निची, these are the three people जिसको हम place नहीं कर पाए थे. तो निची should be the correct answer and पुची, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ पर देखें तो निची, पुची एंड रुचि, तो पुची एंड निची बोथ शुड बी द करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए ये दोनों आंसर्स. In an immunization drive in a hospital, receptionist was asked to allow one male passenger when the color code announced is blue. तो अगर blue announce हुआ है तो बेसिकली एक मेल एंटर करेगा. ओके, नाउ अगर कलर कोड अनाउंस हुआ है पिंक तो एक फीमेल एंटर करेंगे. ओके, एक फीमेल एंटर करेंगे. इफ द कलर कोड अनाउंस्ड इज ग्रीन देन देयर विल बी 2 मेल and 3 females that will be allowed in the hospital. And if the color code announced is red then क्या होगा, उसमें 2 female and 1 male will be exited from the hospital. So 1 male and 2 female ये exit करके जाएंगे. ओके, सो ये एक अलग चीज हो रही है हॉस्पिटल में. नाउ देयर इज अ सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस दैट हैज बीन गिवन टू अस व्हिच इज दिस वन. The sequence is given to us which is this one, B, P, G, B, B and so on. And in the second sequence, green at the odd positions is replaced with blue and pink at the even positions is replaced with red. तो ऐसा कुछ दिखेगा. So if I call it the first sequence then this would be the second sequence. तो देखते हैं. The question asked is how many patients are still left in the hospital for female patients which are left in the hospital for immunization. So first case में the total number of female patients कैसे calculate करूं? Total number of, first of all I need to calculate the total number of pink. So total number of pink अगर मैं देखता हूं first case में तो 1, then 2, then 3, 4, then we have the 5th and the 6th one. So in total 6 pinks are there. So pink 6 है. Now if I talk about the green one, the total green ones are 1, 2, then 3, 4, 5, 6 and 7. The total green ones are 7 and the total red ones would be 1, then there is 2, उसके बाद 3. The total red ones are 3. Let's do the same thing with the second sequence. तो first हम pink देखेंगे. The pink would be 1, then we have the second pink is this one. There are 2 pinks that we are able to find. Now उसके बाद अगर pink मैंने लिख दिया for the second sequence is 2, then green देखते हैं. So if we talk about the green one, एक green,
then the second green, the third green, and the last one. So there are 3 greens and finally the red one. So red मुझे दिख रहा है R1, then 2, 3, 4, red 5 and 6 and 7. A total of 7 reds are there. Now let's see. फर्स्ट सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द हॉस्पिटल. सो फर्स्ट सीक्वेंस में पिंक 6 है, मतलब इसकी वजह से +6 हुआ होगा, राइट. ग्रीन 7 है, इसकी वजह से 7 into 3 21 प्लस हुआ होगा. और रेड 3 है, इसकी वजह से -6 हुआ होगा. सो बेसिकली +22 फीमेल्स वर ऑलरेडी देयर. ओके, +22 फीमेल्स वर ऑलरेडी देयर इन द फर्स्ट सीक्वेंस. इन द सेकेंड सीक्वेंस पिंक 2 है, बेसिकली 2 ऐड हुआ होगा इसमें, राइट, +2. देन ग्रीन में देयर इज 3, तो 3 into 3 +9 हुआ होगा. एंड 7 रेड -14, तो 9 + 2 11 -14, दैट इज -3. यहां पर देयर इज 6, सो इट शुड बी 21. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट सीक्वेंस में देयर वर +21, they were +21 in the first sequence and in the second sequence they were -3. तो अभी कितने फीमेल पेशेंट्स बाकी हैं? दैट इज इक्वल टू 21 - 3 which is 18, and we can say that option A should be the correct answer, that is 18. Next question. So in this question, in a certain way, diamond is coded as something, bronze is coded as something, silver को कैसे कोड करें? तो देखो बहुत सिंपल सा है ये. डायमंड लिखते हैं. So first of all, a diamond, diamond, so DIAMOND. फिर लिखते हैं ब्रोंज. एंड फाइनली सिल्वर. ओके, नाउ इनका नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा? D का होगा 4, I का होगा 9, A will be 1, M is 13, then O would be equal to I would say that 15, N is 14 and D is 4. Now B2, R is 18, O 15, N 14, Z 26 and E is 5. एंड सिल्वर का S से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 19, देन 9, L would be equal to 12, V is 22, E is 5 and R is equal to 18. तो अभी यहां पर एक चीज देखो, I'll write down the code for diamond. It is 22331133, 22331133 5 and 113357 2722. सो एक बार देखो, 4 को 2 into 2 लिखते हैं, 9 को 3 into 3 लिखते हैं, 1 को 1 into 1, बेसिकली 1 is 1, 13 को 13, 15 को 3 into 5, 14 को 2 into 7 and 4 को 2 into 2. तो बेसिकली लीविंग द प्राइम नंबर और सबको फैक्टराइज किया है इन द प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म. सो सिमिलरली कैन वी डू विद द सिल्वर एज वेल. सो इट शुड स्टार्ट विद 1 9, देन I would be 3 3, then L would be 2 into 2 into 3, 2 2 3, then V should be 2 1 1, 2 into 1 1, then 5 is a prime number as it is, and finally 18 should be 2 into 3 into 3, लेकिन यहाँ पर 2 into 9 जैसा ही कुछ दिखा है, and if you tally it you will get that option D should be the correct answer. The next one, that is a 39th question. The wall clock of Zebo's house was not working properly. Zebo noticed on Tuesday noon पे, तो मतलब 12 noon पे Zebo ने देखा that it is 2 minutes slow, -2 minutes है, ठीक है. And he planned to observe the behavior for a week. On the same day he noticed that clock was 4 minutes 48 seconds fast at 2 o'clock. मतलब next week on the same day at 2 PM
उसको दिखा दैट द क्लॉक इज 4 minutes 48 seconds, जिसको मैं सिंपल सा 48/60 दैट इज इक्वल टू 4/5.8 मतलब 4.8 लिख सकता हूं। 4.8 minutes फास्टर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इन 1 week and 2 hours, that is 1 week which is equal to 24 into 7 plus of 2 which is equal to 170, sorry. So in 170 hours there was an increment of 6.8 minutes. So अगर 6.8 minutes का increment 170 hours में है तो 170 hours को भी अगर minutes में convert करें 170 into 60 बनता है। Now if I want to find out कि 2 minutes का improvement, क्योंकि अगर 2 minutes उसने improve करा तो right time दिखा रहा होगा, so 2 minutes का improvement कितनी देर में हुआ होगा? The 2 minutes improvement would be 170 into 60 divided by 6.8 into 2, and this will give the correct answer for you. It will be equal to somewhere around I think 3000 के आसपास आएगा, मतलब 3000 minutes की बात कर रहा है। If I convert it into hours, so I'll divide it by 60 which is equal to 50 hours, और 50 आवर्स को अगर मैं कन्वर्ट करूं इट विल बी इक्वल टू 2 days and 2 hours, मतलब ट्यूसडे का वेंसडे थर्सडे को 2 बजे, क्योंकि मुझे 2 घंटा और ऐड करना पड़ेगा, एंड आई वुड से दैट 2 o'clock 2 PM on Thursday would be the correct answer. So let's move on to the next question, which is a clock is placed that at 12 noon its minute hand points towards west. Now the mathematical operators have been placed at the minute hand position at particular time given below. अभी कुछ ऐसा है that less than का साइन मिलेगा हमें 15 minutes before noon. Equal to का साइन will get at 10 minutes past 2, greater than sign half past 6, multiply sign at 20 minutes past 7, plus का साइन will be at quarter past 8, minus sign will be at 9 o'clock, and division sign at 5 minutes to 10. तो ऐसा कुछ डायग्राम में सोच सकता हूं दैट एज वी कैन सी यहां पर एट द वेस्ट मींस इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से दिस नेगेटिव साइन एट 9 o'clock. 9 o'clock पे योर मिनट हैंड इट इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, सो ये वेस्ट में रहेगा बिकॉज 12 नून पे वेस्ट में पोजीशन है. नाउ सिमिलरली लेस देन साइन 15 मिनट्स बिफोर नून, सो इट शुड बी हियर राइट 45 पे. देन इक्वल टू साइन एट 10 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 10 मिनट बाद, मतलब एट 2, राइट, सो इट शुड बी हियर. देन ग्रेटर देन साइन हाफ पास्ट 6:30 पे, तो उस टाइम मिनट हैंड यहां पर रहेगा. मल्टीप्लाई का साइन विल बी एट 20 minutes past 7, so it should be here at multiply, right, at this place. पॉजिटिव साइन एट quarter past 8 मतलब 15 मिनट बाद, तो यहां पर एंड फाइनली योर डिवीजन साइन 5 minutes to 10, 10 बजने में 5 मिनट जब होंगे, सो इट शुड बी हियर. And now we need to find out which of the following, which of these would be the correct mathematical expression with respect to the above information that is given in the question. Now as we can see, 6 north, 4 southwest, 8 north. So इसको एक बार decode करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा. It means that 6 then north, 6 then north is at this place which is a positive sign. Then 4 southwest, 4 and southwest would be here and it will be a division sign. और अभी आपको after you are done with this particular mathematical expression आपको देखना है whether it holds true or not. For example, 6 plus 4 divided by 8 into 2. So 4 divided by 8 into 2, that will be equal to 1. So 6 plus 1, that is 7, which is greater than 9 minus 6 into 2 divided by 3. So 6 into 2, that is equal to 12, divided by 3 is equal to 4. 9 minus 4 is equal to 5, which is greater than 3 into 2 divided by 1, which is equal to 6 minus 5, that is 1. तो हाँ, मुझे दिख रहा है that 7 greater than 5 greater than 1 is the correct expression. तो मैं इसको करेक्ट बोल सकता हूं. एंड सिमिलरली इफ यू गो फॉर बी, सी एंड डी, वहां पर आपको
करेक्ट एक्सप्रेशंस नहीं मिलने वाले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाला किया है, द क्वेश्चन नंबर 40। सो इन अ कोडेड लैंग्वेज द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैव बीन प्लेस्ड इन क्लॉक, अगेन लाइक जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर इज द पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड। द कोडिंग इज एज फॉलोज। प्लस मतलब 725, मल्टीप्लाई मतलब 515, डिवीजन का साइन इज 9 o'clock, लेस देन का साइन विल बी 1055, ग्रेटर देन का साइन 330, इक्वल टू का साइन 105 एंड माइनस का साइन इज 1125। तो ऐसा कुछ मैं फिगर बना सकता हूं, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं कि प्लस मतलब 725 एंड सो ऑन। नाउ इफ द पोजीशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू changed by a rotation of 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree, 180 degree and 210 degrees in clockwise and anti-clockwise direction alternatively. ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल प्लस विल बी चेंज्ड बाय 30 degrees in the clockwise direction, then minus will be changed 60 degree in the anti-clockwise direction and so on. अभी 30 डिग्री का मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं 30 डिग्री मतलब 5 मिनट आगे, 60 डिग्री मतलब 10 मिनट पीछे, 90 डिग्री मतलब 15 मिनट्स आगे, 120 डिग्री मतलब 20 मिनट्स पीछे, देन दिस इज 25 मिनट्स आगे, देन दिस इज 30 मिनट्स पीछे एंड 210 डिग्री विल बी प्लस ऑफ 35। तो अगर मैं ये इनकॉर्पोरेट करता हूं ये चेंजेस, सो आई वुड से कि ऐसा कुछ बन जाता है। यहां पर मुझे +5 करना है, यहां पर सॉरी प्लस में +5 करना है, देन माइनस में आई हैव टू डू माइनस ऑफ 10, देन मल्टीप्लाई में +15, देन देयर इज डिवीजन दैट इज -20, then there is less than which is +25, then there is a greater than which is -30 and finally this is +35। तो ऐसा कुछ मुझे दिखता है एंड I'll be able to transform the timings of the particular symbols that are given in the question। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर I have to change the options according to the information that has been given to me। For example, this 1115 यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ that 1115 is somewhere here, तो इसको मैं नेगेटिव साइन से रिप्लेस करना चाहता हूँ। Then 530 will be somewhere here, और इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, मल्टीप्लाई के साइन से। Then 840 would be somewhere here and it will be replaced with a division sign, and similarly I can decode the entire expression, all the 4 options। यहाँ पर फिर से मुझे देखना है which should be the correct answer जो कि hold कर रहा है equality या inequality। Let's move on to the first option। So 4 into 1 divided by 2 that is equal to 2, 6 minus 2 plus 3 that is equal to 7, greater than 1 into 8 divided by 4 which is 2। So I would say that option 1 is the correct answer। Similarly आप सारे options देखेंगे and you'll verify कि कौन सा option would be the final correct answer। So this is a question on blood relations। यहाँ पर मुझे clearly mentioned है that there are some codes which are given to us। These are the codes which have been given to us। So let's move on to the first option। यहाँ पर question ऐसा पूछा है which of the following indicates that Pick is the daughter-in-law of Mick। ओके सो इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। नाउ चेक @Pick, अगर मैं ये वाला देखता हूं तो यहां पर मुझे kit @cat का मतलब है kit is the sister of cat। तो सिमिलरली यहां पर check is the sister of Pick, then Pick delta Nick, डेल्टा वाला मुझे ऐसा दिख रहा है, it should be that Nick is the mother of Pick, Nick is the mother of Pick। Then Nick multiply by Vic, Nick multiply by Mick, Nick multiply by Vic, that is Vic is the daughter of Nick, so Vic is the daughter of Nick। Then finally Vic equal to Tick, equal to वाले साइन में मुझे यहाँ पर clearly visible है that Tick should be the father of Vic, Tick should be the father of Vic। यहाँ तक सही चल रहा था and finally Tick are Mick। तो यहां पर ये वाला कुछ है कि it says that Mick is the husband of
Tick, Mick is the husband of Tick. अभी यहाँ पर there is a huge discrepancy that we are able to find out कि Nick is the wife of Tick and Tick is the husband of Mick. तो यहाँ पर polygamy का केस है, so this is not possible when we are solving blood relation questions. And similarly, you can verify all the 4 options and the answer which is correct, जो कि इस relationship को show कर रहा है, that is Pick is the daughter-in-law of Mick. You can solve the question. Let's move on to the next one. यहाँ पर the mathematical operators, these are the operators, has placed at the minute hand position at these places respectively. Now the operator position has rotated 5 minutes, 7 minutes, 9 minutes, 11 minutes, 13 and 15 minutes respectively, again in clockwise and anti-clockwise directions alternatively. We have to find the correct combination of the operators in the form of time which satisfies the given equation. तो यहाँ पर ऐसे कुछ operators हैं, राइट अभी उनका प्लेसिंग है 78 डिग्री, 162 डिग्री, 210 डिग्री, 114, 240 एंड 312 डिग्रीज. तो लिख दिया वहां पर. नाउ 5 मिनट्स, 7 मिनट्स इनको ऑल्टरनेटिवली मुझे प्लेस करना है. मतलब बेसिकली यहां पर माइनस ऑफ 5 मिनट्स होगा, मतलब यहां पर माइनस 5 मिनट्स होगा. अभी मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिनट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि 1 मिनट मतलब 6 डिग्री. ठीक है, 1 मिनट मिनट हैंड का इज इक्वल टू 6 डिग्रीज. तो मतलब मुझे यहां पर ऐड करना है कितना? प्लस 30 डिग्री, माइनस 42 डिग्री, प्लस 54, माइनस 66, प्लस 78 एंड माइनस 90 एंड विल गेट द आंसर्स एज 108, 120, 264 एंड सो ऑन. So यहाँ पर कहानी नहीं खत्म होती. We have to again convert these degrees into minutes itself. तो यहाँ पर 108 degrees will be converted into minutes by dividing by 6. So if I divide this 108 by 6, that will be equal to 18 minutes. Then 120 divided by 6, that is 20 minutes and so on. Right? Now अभी मुझे ये 8 देन 25, 9, 3, 38 इनके बीच में ऐसे ऑपरेटर्स लगाने हैं जिससे कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी होल्ड करे. सो आई कैन से दैट दीज आर द ऑपरेटर्स दैट आई नीड. अभी मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई चाहिए, देन डिवीजन, देन देयर इज एन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल टू. तो सिंपली इफ आई वांट मल्टीप्लिकेशन तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर 644 बिकॉज आई वांट 44 एट दिस प्लेस, राइट. देन अगर मुझे डिवीजन चाहिए, डिवीजन के लिए 8 मिनट का मिनट हैंड चाहिए, मतलब यहां पर 708. सिमिलरली अगर मुझे एडिशन चाहिए, इफ आई वांट एडिशन, सो आई वांट 18 मिनट्स इन द आवर, सो 918. देन इफ आई वांट सब्ट्रैक्शन का साइन, देयर शुड बी अ 20 मिनट्स इन द मिनट हैंड, 1020. एंड फाइनली इक्वल टू का साइन 53 पे आता है. सो यहां पर 253. और क्या आंसर आपको सही लग रहा है? आई वुड से दैट सेकंड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 2 शुड बी द नॉट ऑप्शन 2. सो बेसिकली 644, then this option 4 should be the correct answer. 644, 708, 918, 1020 and 253, that is option 4 should be the correct answer. The next one, in the word quarantine, तो यहां पर QUARANTINE, which letter comes 7 letters before the letter which comes 4 letters after the second appearance of the first letter to occur twice in the word. तो पहले इसको डिकोड करते हैं. Second appearance of the first letter to occur twice in the word. जो सबसे पहले ऐसा लेटर जो 2 बार अपीयर हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर A has appeared twice for the first time, right? So ये पहला अपीयरेंस, ये सेकंड अपीयरेंस. So second appearance of the first letter to appear twice in the word. तो इसकी बात कर रहे हैं हम. This is the second appearance of the first letter to appear twice. Now उसके बाद comes 4 letters after this word. So 1, 2, 3, 4. मतलब we are talking about this one. 7 letters before this letter. इससे 7 लेटर पहले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So your final answer would be U. That is option B, जो कि सारी conditions को fulfill करता है. So next question, यहाँ पर 12 plus 3, 12 plus 3 और ये 3 बन जाता है. So basically I need to divide it by 5. So 12 plus 3 divided by 5 is equal to 3 itself.
नाउ 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों के एडिशन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अभी इन दोनों की बात करते हैं। 29 प्लस 7 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9, ये वाला बन जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको पकड़ता हूं 21 by 4, if I divide it by 5, it is equal to 5 itself, and I can say that a का value is equal to 5, और a का value सिर्फ एक जगह 5 है, so option 2 should be the correct answer. Next, how many triangles are there in the following diagram? यहाँ पर total number of triangles कितने हैं? तो चलो गिनते हैं. So I'll change the ink color. So this is your first triangle, right? Then this one is the second triangle, then the entire triangle, ये पूरा का पूरा triangle, 3 हो गए। Now 4 5 6 7 7, then 8 the entire triangle, 9, then 10 this triangle, then this triangle 11, right? Then 12 13, उसके बाद 13 तक हम आए तो अब मुझे और कुछ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। 14 15 16 and 17, a total of 17 triangles I am able to find in this particular diagram. So basically 17, that is option 3 should be the correct answer. Next question, there is a certain relationship between the words, मतलब ये analogy का question है basic. So lion के claws होते हैं तो eagle के talon होते हैं, so option B should be correct. Next question, study the diagram given below. 500 students appeared in an exam comprises test in English, Hindi and Urdu. ये तीनों टेस्ट हैं. The diagram gives the number of students who failed in different tests. Failed, total failed in different tests. What is the percentage of students who failed in at least 2 subjects? मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो या 3 सब्जेक्ट में हुआ. So this is the person, these are the people who failed in English and Hindi. These are the people failed in English and Urdu. ये लोग उर्दू और हिंदी में फेल हुए हैं, एंड 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. सो कैन आई से 12 प्लस 12 24 प्लस 5 दैट इज 29 प्लस 10 39. सो 39, a total of 39 out of 500 failed in all the 4 at least 2 subjects. So 2 subjects or 3 subjects, that is 39, and this is equal to 7.8% of the total people who failed in at least 2 subjects. So we can say that option A should be the correct answer. So in this question we need to arrange the following in the right sequence following the order in which they occur. ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी की तरह हमें प्लेस करना है, अकरेंस के ऑर्डर में प्लेस करना है. सो आई वुड से दैट 1 2 3 4 5 ऐसा करके नेमिंग करते हैं. नाउ सबसे पहले आता है सीड, देन स्प्राउट, देन सैपलिंग, then plant, and finally tree. So 3 2 1 4 5 should be the correct combination, and option A should be the correct answer. For the next one, Silox ka question simple sa. Now the statements given are all women are trains. All women are trains. And the second statement, some trains are painters. Some train are painters. Now let's move on to the conclusion. Some trains are women. Some trains are women. Obviously some trains should be women because all women are trained. So first statement absolutely true. Some women are painter, कोई जरूरी नहीं है as per the Silox diagram that we made. So second statement is not necessarily true. So only conclusion 1 follows. Now the next question that which is question number 53. Now in a code language, abacus is written as CDCEWU. Then how will the code word sudoku in the same language? तो इसको देख लेते हैं. So first of all, I'll write abacus, ABACUS. Now it is coded as CDCEWU. अगर मैं इसको देखूं, so this is 1 2 1 3. अगर U की बात करूं 21 and 19. Now if I talk about CDCEWU, तो इसकी बात करते हैं तो हमें ये मिलता है that this is 3, this is 4, this is 3, 5, 23 and 21. यहाँ पर clearly visible है कि सब कुछ +2 हो रहा है, right?
Now, if I talk about, let's say, Sudoku, तो Sudoku, if I write here, SUDOKU, अगर Sudoku की बात करते हैं, it is 19, 21, 4, 15, 11 and 21, right? तो अगर इसको +2 करता हूं, it will become 21, 23, 6, 17, 13 and 23, which is UWF. 17 is Q, M and W. So this should be the correct code. अगर correct code ये वाला है तो कौन सा start होगा? UWQ, UWF, QMW. So absolutely correct answer would be option 2. Next question 54. 5 friends A, B, C, D and E are sitting around a circular table facing the center. तो ऐसे 5 लोगों को बैठाते हैं. So these are the 5 people, 1, 2, 3, 4 and 5. So now A does not sit next to E. मतलब A और E आसपास नहीं बैठते. B is sitting to E's immediate right. तो अगर E यहाँ बैठा है तो B should sit here. Now C does not sit next to D. C और D आसपास नहीं बैठते. D has E sitting immediately next to her. तो मतलब E के immediate next में है, right में already B है, so D should come here, right? Now, if I talk about C and D, so C should not be immediate next to D. So C should come here and A would be here. Now, therefore, C is sitting immediately between, C is between A and B. So I would say option C should be the correct answer, that is B and A. The next question 55. Now, the following figure shows 4 positions of a dice. Find out the alphabet which is opposite to the face with alphabet B. तो यहाँ पर I would be making a net. So ऐसा कुछ question है, right? यहाँ पर मैं B को बीच में रखता हूँ. Okay. Now, as per this diagram, the third one, अगर B के नीचे E है तो right में A होगा, right? तो E को यहां रखता हूं, A को यहां रखता हूं. As per the second diagram, B के अगर लेफ्ट में D है तो टॉप में C होगा. तो D को यहां रखता हूं तो C यहां आएगा. Now obviously the last position left is F. We already know that in a net opened form of a cube, उस net में alternate places are occupied by the opposite faces. So B and F should be opposite to each other, A and D should be opposite to each other, and finally C and E should be opposite to each other. So we can say that B ke opposite should be F, which is option A should be the correct answer. Next question. Now this is a data sufficiency ka question. Given below is a question followed by 2 statements. Which option follows the right condition for answering the question? तो इनमें से कौन सी कंडीशन मुझे आंसर करने में हेल्प करेगा? So the question is, in which year was Jitan born? So Jitan is 25 years younger to his mother. So let's say mother का age M है, तो Jitan का age M minus 25 होगा. अकेला statement 1 is not able to answer the question. Statement 2. Jitan's brother was born in 1994. मतलब जितिन के ब्रदर की एज मुझे पता है. 94 में ब्रदर का बॉर्न हुआ. is 35 years younger to his mother. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट का यूज करूं तो यहां पर मुझे जितिन के ब्रदर की एज पता है, उसकी वजह से add 35 करके I'll be able to find out the mother's age, और स्टेटमेंट 1 का यूज करके उसमें 25 सब्ट्रैक्ट कर दूं and I'll be able to find out what is the age of Jitan. So I would say that both the statements together are sufficient to answer the question. Option 4 should be the correct answer. Next question. Again a blood relation, a lot of blood relation questions are there. Now if A minus B means A is the wife of B, A plus B means A is the daughter of B, A divided by B means A is the son of B, what will be the relationship between S and U if S minus T divided by U in this? So S plus T, यहाँ पर देखो S is the daughter of T, ऐसा लिख दो, S is the daughter of T, then T divided by U, इसको देखो T is the son of U, T is the
son of U. So S is the granddaughter of U. So that's why D should be the correct answer. Next question. Now select the option which will correctly replace the question mark in the series. So C 10, G F 16, J I 22, M. Now C is basically your 3, G is 7, F is 6, J is 10, I is 9 and M is 13. तो अगर मैं देखता हूँ 7 plus 3 is equal to 10, 6 plus 10 is equal to 16, 9 plus 13 is equal to 22 और यहाँ पर there is plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. So the next number should be 9 plus 3 that is 12 and 13 plus 3 that is equal to 16. So 12 और 16 का addition should be equal to 28. Now 12 is equal to L and 16 is equal to P. So L28P should be the correct answer, option D. Next one, this is a basic question of non-verbal reasoning. तो यहाँ पर ये तो बहुत ही simple question है. ये फिर ऐसा टर्न हुआ 45 डिग्रीज तो ये बन गया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगेन अ 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज टर्न, ये बना. अगेन अ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न, ये. सो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? इस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए. एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स द सेम डायरेक्शन. सो ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, धीरेन वॉक्ड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, देन ही टर्न्ड लेफ्ट. बेसिक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन. सो वॉक्ड 5 kilometers in the north direction, then he turns left and walked 5 kilometers. ऐसा करके finally he takes left and walks 10 kilometers. तो वो यहां पर आ गया 10 kilometers. In which direction is he from the starting point? तो यहां से यहां आने में ये कौन सा डायरेक्शन है? This is basically west, this is south, so it should be southwest. तो southwest, option D should be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहां पर एक आपको पूरा सर्किल कंप्लीट करना है, तो इसको मैं ऐसा करके सर्किल कंप्लीट कर देता हूं. देन देयर आर 4 लाइंस व्हिच आई नीड टू ड्रॉ, 1 2 3 एंड 4. तो ये वाला फिगर कहां दिख रहा है आपको? और हाँ, जस्ट वन मोर थिंग, ऐसा 3 स्मॉल सर्कल्स वुड बी देयर. तो यहां पर ये तो गलत है बिकॉज द लाइन शुड बी लाइक दिस. ओके, then this one is also wrong because ऐसा भी करना जरूरी था. Then these are the two options. मुझे basically these are the two options which are correct because they are absolutely same. So whatever options you get, इन्हीं में से यही question, यही solutions होंगे जो correct होंगे. Next one, if 7th day of the month is 4 days after Friday, if 7th day of the month, तो 7th डे को क्या मैं बोल सकता हूं? इट इज 4 days आफ्टर फ्राइडे. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 7th को ट्यूसडे है. नाउ व्हाट विल बी द 31st डे ऑफ द मंथ? अभी देखो 31st की बात कर रहे हैं, 31st की, तो उसमें से 31st minus 7 is 24. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 24 days आफ्टर 7th. तो 24, if I divide by 7, the remainder, these 3 lines are for remainder, that the remainder is equal to 3. तो यहाँ पर मैं Tuesday plus 3, so Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, so it should again be a Friday and option B should be the correct answer. Next question, find the missing number 31425 coded as 810, 52346 coded as 1024, 45237 coded as 1121 and so on. तो यहाँ पर अगर मैं अच्छे से देखूं, if I am able to if I see it closely, so 31425, अगर इन 3 का एडिशन करूंगा, 3 + 1 4 + 4 8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इट शुड बी 10. सो 810 बना, राइट? आर वी एबल टू सी दिस? सो 523 का एडिशन क्या होगा? 10, और 4 × 6 24, सो 1024. सिमिलरली 4 5 and 2 that is equal to 11 and 3 × 7 that is 21, so 1121. Now similarly 6 4 3 8 2, so 6 + 4 10 + 3 13, 8 × 2 16, so 1316, option D should be the correct answer. So
Again, a simple direction sense ka question, question number 65. Akshi starts from her house and goes towards east. So there is a person called Akshi. ये उसका हाउस है and she starts from her house and goes towards east. East में जाती है, sorry, this is the east. East में जाती है कितना? 5 kilometers. After 5 kilometers, after walking for 5 kilometers in the same direction, she meets her friend. She meets her friend Ashfaq. Now, who was coming from the opposite direction? वो इधर से आ रहा था, अशफाक इधर से आ रहा था. Now, both of them turn towards the left of Ashfaq. Left of Ashfaq would be in this direction, the south direction, and walks together for 4 kilometers. यहाँ पर उन्होंने 4 kilometers walk किया to reach his house, अशफाक का house. From there, Akshi walks 5 kilometers towards west. अभी फिर से 5 किलोमीटर वो वेस्ट में गई. Now how much distance she should walk to reach her house? तो ये कितना डिस्टेंस है? This is 4 kilometers remaining. And in which direction? It should be in the north direction क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ जाना है. So 4 kilometers towards north. Option A should be the correct answer. Next question. Study the following figure and answer the question given below. Which letter represents married scientists who do not live in a joint family? So देखो, married मतलब we are talking about this triangle, and scientist it means that we are talking about this, right? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, एक तो E और एक B. But do not live in a joint family मतलब मुझे ये वाला सर्किल नहीं चाहिए. This oval shape I don't want, तो B exclude हुआ and E exclude हुआ and only B should be the correct answer, which is option B. Next question. Details of a survey conducted among 200 students of a school on a particular day is as follows. 40% of the students came by bicycle. So if I talk about bicycle, bicycle BI से start होता है, okay, तो 40%. Let's say that a total of 200 students are there. तो total 200 लोग हैं, तो 40% मतलब 180 students should be coming from bicycle. Then 50% by walk. Walk से कितने लोग आते हैं? 100 students will come by walk, right? And remaining by bus. बस से बचे हुए बच्चे बस से आते हैं, मतलब 20 remaining students. Now 30% of the students who came by bicycle and 40% of students who came by walk play cricket. इन्हीं में से, ये तो टोटल है. Now इन्हीं में से क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं? तो 30% बाइसिकल वाले मतलब 24 एंड 40% जो कि वॉक करके आते हैं, सो 40 यहां पर रख दूंगा. नाउ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम बाय बस डू नॉट प्ले क्रिकेट मतलब 60% क्रिकेट खेलते होंगे जो बस से आते हैं, मतलब 60% ऑफ 20 is 12, राइट? तो सिमिलरली नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इफ वी रिप्रेजेंट हु कम बाय वॉक एज ए, ये A है, then who come by bicycle is B and the people who play cricket is C, ये C है. तो अभी देखना है, then choose the diagram which shows the survey result. So basically यहां पर अगर मैं देखूं, देखो कुछ बच्चे बाइसिकल के अंदर आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वोंट बी एन इंटरसेक्शन बिटवीन बाइसिकल एंड वॉक. तो ये वाला तो गलत हो गया. A और B के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आने वाला, क्योंकि या तो बाइसिकल से आएगा या फिर वॉक से आएगा, दोनों करके तो आ नहीं सकता. सो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अभी देखते हैं 1, 2 और 4 में. यहां पर बीच में आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, 8, 6 एंड 12. तो यहां पर कितने बच्चे हैं क्रिकेट खेलने वाले जो कि ना ही बाइसिकल से आते हैं ना ही वॉक से आते हैं, क्योंकि ये जो 3 नंबर्स लिखे हैं दीज आर आउटसाइड A एंड B. तो अगर मैं बोलूं बस से आने वाले 12 बच्चे हैं, so there should be 12 written over here, so I would say that option 4 should be the correct answer. Next question. 21 students are standing in a row. Neetu wants to join among them. Teacher asked Neetu to stand behind Madhav, who was standing at 10th position from the back. अभी देखते हैं. So Madhav is standing 10th position from the back, मतलब उसके पीछे 9 बच्चे खड़े होंगे. And the total of 21 are there, तो उसके आगे 11 बच्चे खड़े होंगे, right?
अभी नीतू को वो बोलती है टीचर कि नीतू टू स्टैंड बिहाइंड माधव, तो ऐसा कुछ बन जाता है, माधव then Neetu, then there are 9 students and 11 students, right? Now looking at the height of the students, teacher interchange the position of the student standing 14th from the back with the student 12th from the front. अभी थोड़ा सा इसको expand करते हैं, 1 2 3 ऐसा कर करके 8 9 10 11, then Madhav, then Neetu and the 9 students. So 14th from the back को लिया, 9th from the 9 10 11 12 13 14, मतलब इसको पिक किया, और 12th from the front, 12th from the front is माधव, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, मतलब अब माधव यहां आ गया और 9th वाला यहां आ गया. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन नीतू एंड माधव, इन दोनों के बीच में कितने लोग खड़े, ये 3 लोग हो गए, 10th 11th and 9th. So I would say that 3 should be the correct answer, which is option 4th, which is option D. Next question. So यहाँ पर we have to find out what is the missing number. So 1 2 and 4 का summation is 7, 5 और 2 का summation is 7 और यहाँ 7. Similarly 3 4 5 का summation 12, 6 and 6 का summation 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर summation 19, तो यहाँ भी 19 आना चाहिए, and I would say that option A, which is 19, should be the correct answer. Simple question. Next one. In 2020 January 3rd, मतलब 3rd January 2020, this is a Friday. Now what will be the day of January 3rd 2021? मतलब डे तो सेम है, सॉरी डेट सेम है, लेकिन ईयर अलग है, तो यहां पर पूरा एक साल निकल गया होगा. कितने दिन निकले होंगे, बिकॉज 2020 इज अ लीप ईयर, सो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, देयर इज एन एडिशन ऑफ 366 डेज, एंड अकॉर्डिंग टू कैलेंडर्स का रूल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑड नंबर्स. ओके, सो 366 डिवाइडेड बाय 7, द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स या फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2. तो मतलब यहां पर मैं +2 कर देता हूं, फ्राइडे में 2 इंक्लूड करूंगा, तो सैटरडे संडे शुड बी द correct answer, which is option C. So this is a basic sudoku का question. यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमें क्या निकालना है, first, second and third. So as we can see, first में if I go through the column, so @ is already there, star is there, W is there, C भी है, R भी है और $, भी है. अगर रो वाइज जाता हूं तो साई भी है और हैश भी है, सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली डेल्टा, तो आई कैन से दैट फर्स्ट वाला तो डेल्टा ही है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड वाले में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां मुझे स्टार दिख रहा है, यहां स्टार दिख रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार ही आएगा यहां पर, एंड आई वुड से दैट सेकंड में स्टार आएगा. एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, अब एक्चुअल में आपका ये आंसर फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन थर्ड वाले में आर ही आना चाहिए. इफ यू आर एबल टू सी ऑल्सो, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस वाली लाइन में हैश खत्म हो गया, W खत्म, देन C इज ऑल्सो गॉन, @ गॉन, साई गॉन. इस लाइन में अगर मैं देखता हूं तो डेल्टा गया, $, गया, स्टार गया, only R is remaining, so we can say that option A should be the correct answer after we solve it just like a Sudoku puzzle. So this is a very interesting question in which like in the coded language the 12 digits of the clock are represented as 12 symbols. Matlab if I talk about $, that is 1, then AN is 2, then hash is 3, AT and star are 4 and 5, then IN 6 minus 7, IT is 8 plus 9, FIF 10, delta 11 and AF 12. मतलब बेसिकली $, मतलब कि 1 पे है आपका मिनट हैंड या फिर आर हैंड, AN मतलब 2 पे है, हैश मतलब 3 पे है, एंड सो ऑन. नाउ if two symbols are used together, तो first symbol को R hand बोलते हैं और second symbol को minute hand बोलते हैं. Now the teacher started the lecture. Start of the lecture is at IT hash. अभी IT मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8 पे है और hash is 3, मतलब 8 पे R hand है,
और 3 पे मिनट हैंड है, मतलब 8:15 की बात हो रही है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट 8:15। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता है कि कितनी देर के लिए पड़ा है, टीचर्स फॉर ए एन हैश, ए एन स्टार, तो ए एन मतलब ए एन इज बेसिकली ए एन, यहां पर मुझे कहां दिख रहा है, 2 पे, मतलब 2 पे आर हैंड है, और स्टार मतलब 5, तो 5 पे मिनट हैंड है, मतलब 2 hours 25 minutes के लिए पढ़ाया। मतलब एंड कब हुई क्लास? द क्लास विल एंड एट 10:40। नाउ अब उसके बाद बोलता है कि ब्रेक है डॉलर आई एन का, डॉलर मतलब 1 और आई एन मतलब 6, मतलब आर हैंड है 1 पे और मिनट हैंड है 6 पे, मतलब 1.5 hour का ब्रेक है, 1.5 hour का ब्रेक है। मतलब नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगी? आई वुड से 12:10 पे स्टार्ट होगी। अभी 12 मतलब ए एफ और 10 मतलब मिनट हैंड शुड बी एट 2, दैट इज ए एन, तो ए एफ ए एन शुड बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। अभी ऑप्शन बी को मैं करेक्ट आंसर बोल सकता हूं, सभी को समझ में आया होगा, आई होप। नाउ 73rd क्वेश्चन, जहां पर इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, सीक्वेंशियल आउटपुट का क्वेश्चन। यहां पर देयर इज अ इनपुट गिवन टू यू, दिस इज द इनपुट व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, और यहां पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 तक आपको जाना है ना। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो इनपुट से स्टेप 1 पे कैसे आया मैं, सो बेसिकली लास्ट अल्फाबेट का अरेंजमेंट हुआ है। लास्ट अल्फाबेट Y है, देन L है, देन G इज देयर, E, S और K। सबसे पहले आता है E, देन G, देन K, देन S एंड फाइनली Y, राइट? सभी को समझ में आया है, होप। नाउ सेकंड में फर्स्ट अल्फाबेट का अरेंजमेंट है, सबसे पहले A, देन C, देन H, देन L, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R एंड S। अभी थर्ड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड लास्ट का अरेंजमेंट है, मतलब A, देन C, देन N, देन R, देन S एंड T। फिर उसके बाद सेकंड लेटर का अरेंजमेंट, सेकंड लेटर का अरेंजमेंट A, देन B, देन E, O, O एंड फाइनली U। तो अब नेक्स्ट स्टेप 5 के लिए, स्टेप 5 के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, थर्ड लास्ट का अरेंजमेंट होगा, और स्टेप 6 के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, थर्ड का अरेंजमेंट होगा। तो अगर मैं सबके थर्ड लेटर्स को देख लूं, देखो यहां पर मेरे पास थर्ड लेटर है R, यहां पर मेरे पास I है, यहां पर A, यहां पर M, यहां पर G और यहां C। सबसे पहले कौन सा होता है, A, तो आई वुड से रीजनिंग वुड बी एट द फर्स्ट प्लेस, रीजनिंग। उसके बाद मेरे पास लेटर आता है C, मतलब सक्सेस सेकंड आएगा, ओके। उसके बाद A और C कंप्लीट हो गए, देन A B C D E F G, G मेरे पास आएगा, मतलब लॉजिकल नेक्स्ट आएगा। उसके बाद मेरे पास आएगा I, दैट इज एबिलिटी। उसके बाद मेरे पास आएगा आई वुड से M, दैट इज कॉम्पिटेंसी, एंड फाइनली हार्ड वर्क, तो R would be the last one, and I would say कि यहां पर मुझे रीजनिंग, सक्सेस, लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल देन एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड हार्ड वर्क, ऑप्शन बी में मुझे सेम ऑर्डर में दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Next, study the following arrangement of symbols, numbers and alphabets and answer the question given below। ऐसा कुछ आपको symbols and alphabets and numbers दे रखे हैं। In the given sequence, if the vowels are substituted with the next letter of the English alphabet series, vowels को पकड़ो और उसको next letter of the alphabet series में convert कर दो। मतलब for example, A will be converted to B and so on। Then the consonants are substituted with the letter preceding in the alphabet series। consonants को पिछले वाले letter से replace करो, and the symbols are substituted with the vowels in the ascending order of English alphabet series। and then how many consonants, जब ये कर लोगे तो यहां पर अगर मैं देखूं तो दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। जब ये कर लोगे देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन द सीरीज विल बी प्रीसीडेड बाय वॉवल्स एंड फॉलोड बाय नंबर्स। सो दीज आर द टू व्हिच आर प्रीसीडेड बाय वॉवल्स एंड प्रोसीडेड बाय अ नंबर।
यहां पर भी preceded by a vowel and followed by a number. So Q and M would be the correct answer. So 2, that is option B, should be the correct answer. Next question. In a botanical garden, there are numerous trees, shrubs and plants. The 4 trees, neem, bamboo, banyan and people are there in the row. There are 10 trees between. तो यहां पर बैम्बू और banyan के बीच में there are 10 trees, तो यहां पर 10 लिख देते हैं और ये आगे पीछे हो सकता है. Then 5 trees are between neem and bamboo. नीम और बैम्बू के बीच में 5 trees हो सकते हैं. If 7 trees are between banyan and people, तो banyan और people tree के बीच में there are how many 7 trees, ऐसा करके, and 9 trees behind people tree. तो people जहां होगा उसके पीछे 9 trees हैं and 13 trees ahead of neem. नीम के इधर 13 trees are there. अभी मुझे देखना है what can be the minimum number of trees which are possible. तो अगर मैं देखूं, अगर final arrangement अगर मैं बोलूं, there can be numerous arrangements, but अगर minimum के लिए मैं बोलूं तो यहां पर मुझे let's say 7 trees मैं यहां पर रखूं, then bamboo, then 2 trees would be there, then people, then again 2 trees would be there, then neem, then 4 banyan and 1. This will satisfy all your conditions which are given in the question. अभी गिन लेते हैं how many total number of trees are there. 7 plus 1 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 plus 4 18, 19 and 20. So a minimum of 20 trees are required if I want to satisfy all the statements or the conditions given in the question. Next question. The word popular is coded as 3236, 2822 and 30. Now पहले तो popular देख लेते हैं. POPULAR. So popular का अगर मैं देखूंगा तो 16, then 15, उसके बाद 16, 21, 12, A को 1 बोलेंगे and R को 18 बोलेंगे, right? अभी 32, 36 अगर मैं देखूंगा तो यहां पर इन दोनों का एडिशन 32, इन दोनों का एडिशन 36, then these two added and formed 28, then this is 22 and finally 30. तो आपको पूरा अरेंजमेंट मिल गया. Now again vocalist के साथ भी same thing will happen. So टीचर को कोड करते हैं TEACHER. तो 20, then 5, 1, 3, H का मतलब 8, E is 5 and your R would be 18. And the same process will happen. इन दोनों का addition 21, इन दोनों का addition 8, these two added and formed 9, 3 and 5 8 and 8 plus 18 26. तो 2189826. तो ये मुझे कहाँ मिल रहा है? 2189826. Option C, that is option 3 should be the correct answer. Next question. After noting down the odometer reading that showed smallest 4-digit square number. ओडोमीटर मतलब आपका स्पीडोमीटर, वहां पर आपको सबसे छोटा 4-digit perfect square दिख रहा है, that is 1024. Now Rimzim started driving to school with constant speed at 9 AM. 9 बजे स्टार्ट किया. Rimzim started driving to school with constant speed at 9 AM. 9 बजे स्टार्ट किया. After 1 hour मतलब 10 AM तक he observed the delay in reaching school and doubled the speed to reach the school at 11 AM. मतलब 10 to 11 AM यहां पर उसने डबल कर दिया स्पीड. विल रीड द क्वेश्चन अगेन. सो रिमझिम स्टार्टेड ड्राइविंग टू स्कूल विद कांस्टेंट स्पीड एज एट 9 AM. तो 9 बजे स्टार्ट किया जर्नी, 1 घंटे तक कांस्टेंट रखा, उसके बाद डबल कर दिया मतलब 10 से 11. यहां पर स्पीड अगर लेट्स से x है तो यहां पर 2x हो जाती है. So in school parking, he again noticed the odometer which showed the number that reads same from both the sides. तो मतलब 1221 भी हो सकता है, वो 1331 भी हो सकता है, 1441 भी हो सकता है, 1551 भी हो सकता है, and so on.
What is the speed of RimZim at 9:50 AM around? मतलब पहले हाफ में यहां वाला मतलब मुझे x ढूंढना है. ओके ना, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे 197 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, राइट? मुझे 197 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है. अभी 197 divided by 3 that will be equal to 65.66 kilometers per hour. This would be your correct answer, क्योंकि मुझे 3 हाफ में डिवाइड करना था. देखो यहां पर अगर उसने डिस्टेंस d ट्रैवल करी होगी तो यहां पर 2d ट्रैवल करी होगी, because the speed has increased to twice. तो 3 पार्ट्स में अगर मैं बांटता हूं तो पहले पार्ट में the speed would have been this and in the second part double of this. and अगर आपको total distance भी कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हो by multiplying this 65.66 by 3. So I would say that option C should be the correct answer. 78th question. At a crossing there was a direction pole which shows all the 8 correct directions. An engineer wrote the mathematical operators. There are a lot of similar questions in this paper like this. So इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, and we need to understand the basics of this question and have a good grip on these. Okay, so plus minus multiply divide equal to को ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऐसा कुछ दिखा दिया. जैसा कि यहाँ पर प्लस को नॉर्थ ईस्ट, तो मैंने यहाँ पर प्लस को नॉर्थ ईस्ट दिखाया, माइनस को साउथ ईस्ट यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई इज ईस्ट यहां पर ऐसा कुछ, देन डिवाइड इज नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इज इक्वल टू. अभी क्या हुआ, बट ड्यू टू हैवी विंड डायरेक्शन पोल रोटेटेड बाय 180 डिग्री. तो डायरेक्शन पोल सिंबल्स का चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन जस्ट द पोल रोटेटेड. सो वी कैन से दैट कि सभी ने डायरेक्शन फ्लिप कर ली 180 डिग्री, तो अभी कुछ ऐसा दिखने लगा. एंड विदाउट नोटिसिंग द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द पोल ही रोटेटेड द ऑपरेटर्स बाय 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज. अब ऑपरेटर्स को क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर दिया. ओके, एंड दिस इज योर फाइनल थिंग. ओके, नाउ अभी मुझे निकालना है कि 35 क्वेश्चन मार्क 11 यहां पर क्या ऑपरेटर्स लगाऊं. सो आई वुड से दीज आर द ऑपरेटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो यहां पर मुझे अगर मल्टीप्लाई चाहिए इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट, डिवाइड चाहिए इट शुड बी साउथ, देन माइनस इज फॉर नॉर्थ एंड इक्वल टू इज फॉर साउथ ईस्ट. तो these are the 4 things which I need, and I would say यहाँ पर मुझे सारी चीजें मिल रही है, नॉर्थ वेस्ट देन साउथ देन नॉर्थ देन साउथ ईस्ट. सो ऑप्शन सी दैट which is option 3 should be the correct answer. Next one, if plus implies go, minus implies to, multiply implies walk and so on, then identify the correct expression. इसमें फर्स्ट को करके देखते हैं. तो go का मतलब प्लस, देन टू का मतलब माइनस, वॉक का मतलब मल्टीप्लाई, अर्ली का मतलब इज इक्वल टू, बिफोर का मतलब इज लेस देन, सन का मतलब इज ग्रेटर देन, राइज का मतलब इज डिवाइडेड बाय, बिफोर इज लेस देन, सन का मतलब इज ग्रेटर देन, राइज मतलब डिवाइड बाय, एंड अर्ली इज इक्वल टू. सो बेसिकली 5 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4. तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर 3 इंटू 4 12, मतलब 5 प्लस 4 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10 लेस देन 2 ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 3 ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1. तो यहां पर दिस इज एंटायरली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, यहीं से दिख रहा है 4 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट इक्वल टू 1. अगेन 5 ये तो इनकरेक्ट हो गया. लेट्स मूव ऑन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. बी की अगर बात करूं 5 देन वी बिफोर दैट इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 3 राइज मतलब डिवाइडेड बाय 4 देन गो विच इज प्लस, देन 10 2 का मतलब माइनस 2, वॉक का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, अर्ली का मतलब इक्वल टू 2, गो का मतलब प्लस एंड 3, सन का मतलब बेसिकली ग्रेटर देन 4, राइज का मतलब डिवाइडेड बाय 7, वॉक दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1. इसको भी देख लेते हैं.
तो 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही। 4 इज ग्रेटर देन 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 इंटू 3। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा, 2 प्लस 4 इज ग्रेटर, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1। सो इसको समझने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। सो बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय 10, so 3 divided by 4 into 10 है ये basically. So 4 is greater than this minus 6, मतलब 3 by 4 into 10 that is equal to 7.5. 7.5 minus 6, तो ये 1.5 आया which is not equal to 5, तो option 2 is also incorrect. And similarly you can go for option 3 and option 4 और verify कर सकते हो कि कौन सा correct answer आएगा. So this is a basic coding decoding का question, a bit difficult one. इसको देखते हैं हम कि यहाँ पर clearly mentioned है कि अगर मैं ये वाला साइन यूज करता हूँ मतलब डेल्टा इज नॉट ग्रेटर देन ओ, मतलब नॉट ग्रेटर देन इट मीन्स लेस देन हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है. Similarly, if I'm using multiply और asterisk का साइन, it means neither greater than nor smaller than, मतलब basically equal to की बात कर रहा है. Then hash का साइन अगर मैं यूज करता हूं not smaller than, hash मतलब not smaller than मतलब greater than और equal to. पाई का अगर मैं साइन यूज करता हूं तो पाई में neither smaller than nor equal to मतलब greater than की बात कर रहा है. एंड फाइनली ये स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर neither greater than nor equal to मतलब less than की बात कर रहा है. Now let's decode the statement and the conclusion which are given in the question. तो स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखता हूं, तो स्टेटमेंट ए ऐसा कुछ कहता है that your left side arrow is less than or equal to your proportionality sign. Then statement B मुझे ऐसा कहता है कि परसेंटेज पाई डॉलर, पाई का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन डॉलर. स्टेटमेंट सी कुछ ऐसा कहता है दैट डॉलर हैश डाउन साइड एरो, तो डॉलर हैश का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू और डाउन साइड एरो. एंड फाइनली स्टेटमेंट डी ऐसा है कि लेफ्ट साइड एरो पाई एंड डॉलर, पाई का मतलब ग्रेटर देन डॉलर, ऐसा कुछ, राइट? Now, your conclusions which are given are, first conclusion is proportionality sign square which is less than dollar. This is the first conclusion. The second conclusion is dollar star downside arrow. Star matlab equal to, and this is the second one. And the third one says that left side arrow pi matlab greater than is downside arrow, तो left side arrow is greater than your downside arrow. अब देखना है which of the following conclusion is true according to the statements given in the question. तो यहाँ पर according to I would say A and D, dollar less than left side arrow or left side arrow is I would say less than or equal to not, this is not alpha, this is proportionality sign. फिर डॉलर की अगर बात करूं विद ऑप्शन विद स्टेटमेंट बी, डॉलर इज अगेन लेस देन परसेंटेज, एंड अकॉर्डिंग टू सी स्टेटमेंट डॉलर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डाउनसाइड एरो ना. मतलब जो कंक्लूजन टू है दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि डॉलर इज नॉट इक्वल टू डाउनसाइड एरो, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, दिस थिंग इज लेस देन दिस वन. अभी क्या ये ट्रू है, बिकॉज यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू डाउनसाइड एरो, ग्रेटर देन योर डॉलर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड फाइनली द थर्ड कंक्लूजन, योर लेफ्ट हैंड साइड arrow is greater than downside arrow. This is absolutely true. ऐसा क्यों? क्योंकि left hand side arrow is greater than dollar and dollar is greater than or equal to your downside arrow. So I can say that left hand side arrow is greater than, definitely greater than your downside arrow. So only option 2 is correct. Next question, that is 82. A defective watch showed the weird behavior. It gained 5 seconds per 3 minutes for first hour. मतलब first hour में
फर्स्ट आवर में टोटल कितना गेन कर लिया होगा? 5 into 20 मतलब हर 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन करता है, मतलब 60 मिनट्स में 100 का गेन हुआ होगा। नाउ देन लूज 10 seconds per 3 minutes in the second hour। सेकेंड आवर में 3 मिनट में 10 सेकेंड, तो 60 मिनट्स में इट वुड हैव लॉस्ट 200 seconds। सिमिलरली थर्ड मिनट में 15 seconds पर 3 मिनट्स गेन किया है, तो प्लस 300 seconds गेन किया होगा, एंड फॉर 1 hour, और ऐसा चलता ही रहेगा। नाउ द वॉच शोड द करेक्ट टाइम एट 7 AM। व्हाट इज द टाइम इंडिकेटेड एट 7 PM? तो 12 घंटे की बात कर रहे हैं, मतलब फिर से -400 आया होगा। और ऐसे 12 घंटे में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हर 2 घंटे पे -100 हो रहा है, फिर -100, तो ऐसे कितने -100 बनेंगे? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 12 आवर्स, आई कैन से 6 -100s बनेंगे, तो -600 सेकेंड्स पीछे हो जाएगी घड़ी। सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आई डिवाइडेड बाय 60, तो मतलब -10 मिनट्स पीछे होगी घड़ी। इट मीन्स कि 7 बजे की बजाय इट वुड हैव बीन A option, which is 6:50 PM हो रहा होगा in place of 7 PM, because the watch is 10 minutes behind the correct time. Great. Next question, यहाँ पर again a very simple question. इन questions को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, because these are very simple as you can see from our past experience of the same paper. So देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये ऊपर है, then नीचे है, मतलब, और ये बीच में। Similarly, बीच, नीचे, ऊपर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऊपर, बीच, अब नीचे आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, ट्राइंगल, सर्किल, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो यहां पर ट्राइंगल, सर्किल, देयर शुड बी अ स्क्वायर नाउ, देन स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्किल, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर। Now square, circle, there should be a triangle now, and finally there are 2 circles, then this kind of a W, and finally squares। तो ऐसा ही अरेंजमेंट में यहां देखूं, यहां पर W बना, ये बना, लेकिन स्क्वायर नहीं बना, ऐसा करके। So this should be the correct arrangement, और मुझे कैसा दिख रहा है ये ऑप्शन? I would say that option 1 should have been the correct answer. Read these statements very carefully and answer the following. So this is again a data sufficiency ka question in which the statement is given, Tuesday is the wife of Wednesday. So Tuesday is the wife of Wednesday. Then Tuesday and Saturday are only children of Friday. Saturday are only children of Friday. Then Thursday is the only daughter of Wednesday. Thursday, इन दोनों की एक डॉटर है, that is called Thursday, ऐसा करके। Monday is the granddaughter of Friday. Monday is the granddaughter of Friday. Now, Friday की granddaughter या तो सैटरडे की डॉटर हो सकती है या फिर ट्यूसडे की डॉटर हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे? सो इट कैन बी मंडे इज द डॉटर ऑफ ट्यूसडे या फिर नीस ऑफ ट्यूसडे। ये दो चीजें बन सकती है, या तो इसकी डॉटर हो सकती है या इसकी डॉटर हो सकती है। सो बोथ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट। थर्सडे इज मैरिड टू संडे। थर्सडे is married to Sunday. Tuesday is the mother-in-law of Sunday. Tuesday is the mother-in-law of Sunday. So यहाँ पर mother-in-law of Sunday, Tuesday, right? Then Tuesday is the only daughter of Friday. Tuesday is the only daughter of Friday. तो ऐसा करके, and Monday is the granddaughter of Friday. Monday is the granddaughter of Friday. तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी फिर से एग्जिस्ट करती है कि मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। तो यहां पर इसका कोई एक भाई हो सकता है, देयर कैन बी अ ब्रदर जिसकी डॉटर फ्राइडे हो सकती है, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे, और यहां पर मंडे इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्राइडे। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में थर्सडे इज द ओनली डॉटर ऑफ वेंसडे।
तो अभी ना बेसिकली यहां पर वो एम्बिग्विटी भी खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट थर्सडे इज द ओनली डॉटर, तो यहां पर मंडे का आना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज थर्सडे इज द ओनली डॉटर ऑफ फ्राइडे, तो ओनली डॉटर ऑफ ट्यूसडे, तो यहां पर मंडे आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम एबल टू फाइंड आउट द आंसर। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में ट्यूसडे इज द ओनली डॉटर ऑफ फ्राइडे और थर्सडे की बात नहीं करी है, whether Thursday is the only daughter of Tuesday or Wednesday or not. So according to the first statement alone we are able to answer the question, लेकिन second statement से आंसर नहीं कर पा रहे। Next question, female singer are represented in the figure as female, तो female singer मुझे यहां दिख रहा है और मेल मुझे यहां दिख रहा है, तो बेसिकली I want आउटसाइड दिस वन, इसके बाहर चाहिए और इस वाले के अंदर चाहिए। सो आई कैन से, एक तो पंक्चुअल दिख रहा है मुझे, अस, अर्ली, टू, सो आई राइट पंक्चुअल, अस, अर्ली, टू, देन 7, काइंड, फास्ट, 7, kind, past, 5, if is not there, if is outside. So ये सब चीजें इंक्लूड करना I would say is necessary, right? तो देखिए पंक्चुअल सब जगह, पंक्चुअल इधर नहीं है तो C is obviously incorrect. अर्ली कहाँ है, यहां पर अर्ली, यहां पर अर्ली, अर्ली इज नॉट देयर इन द फोर्थ ऑप्शन, सो दैट इज अगेन इनकरेक्ट। सो ये दोनों हमने वेरीफाई कर लिए। काइंड की बात करें, काइंड इज देयर इन बोथ द ऑप्शंस, तो काइंड ठीक है। फास्ट की बात करें, फास्ट यहां पर है लेकिन हाँ यहां भी है फास्ट, तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। 7 इज देयर इन बोथ ऑफ देम, तो 7 भी वेरीफाई कर लिया। एंड फाइनली 5 की अगर बात करूं, 5 यहां पर है लेकिन यहां पर भी है 5। और अगर मैं 2 की बात करूं, 2 यहां है, यहां मुझे 2 दिख रहा है लेकिन ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा, सो आई कैन से दैट ऑप्शन 1 दैट इज ऑप्शन ए शुड बी द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द मिसिंग कैरेक्टर, मतलब यहां पर क्या आएगा। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा सीरीज बनता है। दिस इज अ 6-sided polygon, so 5 plus 6 that is equal to 11, 13 plus 3-sided, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का समेशन चाहिए, तो 1 plus 3 plus 4 1 plus 3 plus 4 that is equal to, यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 आता है, that is equal to 7, यहाँ पर मुझे 9 plus this is 8-sided तो 17, अभी if you see it closely this is 11, this is 7 and this is 17, all of them are prime numbers। यहाँ पर in the fourth one also I want a prime number, तो 4-sided तो मिल गया, तो 4 को अगर मैं 1 और 7 के साथ ऐड करूंगा it will be 12, not a prime number। 4 को मैं 1 और 5 के साथ ऐड करूंगा it would be equal to 10, again not a prime number। 4 को if I add with 5 which is equal to 9, again not a prime number। 4 को if I add with 2 and 1 that is equal to 7, which is a prime number, so we can say that option 4 is the correct answer। Next one, find 89, find the value of A and B। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, बेसिकली इन तीनों का एडिशन अगर मैं देखूं it will be equal to 15, it will be equal to right 15, 8 plus 4 12 plus 3 that is equal to 15। यहां पर अगर मैं देखूं that these 3 is again equal to 7 plus this is equal to 18, 5 6 and 7, if I add these 3 that is equal to 21, 15 plus 3 plus 3, right। now अगर इन तीनों को ऐड करता हूं this is equal to 16, if I add these 3 8 to 16 plus 4 20, if I add these 3 यहां पर मुझे कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी दिख जाती है। उसके अलावा एक तो मैं ऐसा कुछ कर सकता था, या फिर मैं फर्स्ट रोज को देख लूं, क्योंकि why I was not able to proceed, क्योंकि A और B एक साथ आ गए। ओके दूसरा चीज
अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, इट वाज इक्वल टू 16, दिस वाज इक्वल टू 20, तो इन तीनों का समेशन शुड बी 24। उसमें से दिस इज इक्वल टू b प्लस 9 प्लस a, सो a प्लस b वुड हैव बीन इक्वल टू 15। अभी 15 देखो कहां पर बन रहा है, या तो यहां बन रहा है या फिर यहां बन रहा है। ये दो ऑप्शंस तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नाउ दूसरा तरीका, 3 प्लस 8 प्लस 5, 3 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाता है 16, 7 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 17, तो ये कितना बनना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 18, 13 प्लस 2 दैट इज 15। a की वैल्यू मैं 3 बोल दूं, तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 15 रहेगी, सो 3 एंड 15 ऑप्शन a शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 91, if under some rule 4231 is transformed to 3087, तो अगर मैं 4231 को लेता हूं, if I arrange it in such a way that the biggest 4 number is formed, तो मतलब 4321, और इसको ऐसे अरेंज करूं जिससे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनता है, मतलब 1 2 3 4, इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो 3087 बन जाता है। सिमिलरली 6243, अगर 6432 माइनस 2346 करूंगा, इट विल बी इक्वल टू 4086, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमिलरली 76414, तो 7641 माइनस 1467, दिस विल बी इक्वल टू 6174, and our option 3, which is option C, that would be the correct answer. Next question. 91st question, 2833 coded as this, 14122 that is coded as this, and 3858 को कैसे कोड करेंगे? तो इसमें बहुत एक सिंपल सा रूल लग रहा है, देखिए। सो 2833, बेसिकली 2 इज कमिंग 1 टाइम, देन उससे बड़े नंबर पे जाते हैं, 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, एंड 8 इज कमिंग 1 टाइम। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? सिमिलरली 14122, 1 is coming 2 times, 2 is coming 2 times, and 4 is coming 1 time. So that's why 12241. Similarly, 3858, 3 is coming 1 time, 5 is coming 1 time, and 8 is coming 2 times. तो यहाँ पर 315182, that is option B should be the correct answer. Next question, in how many ways a square can be cut into 2 congruent parts? अभी 2 congruent parts एक स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं, ये अच्छा सा नहीं बना बट जैसा भी है, इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर से वॉट एवर लाइन यू क्रॉस, आप ऐसा कुछ क्रॉस कर दो, बट इट शुड बी थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर दो, आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर दो, बट इट शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर। ऑल दीज लाइन्स would cut the square into 2 congruent parts. सारी लाइन्स ऐसा ही करने वाली है, ओके? तो ऐसी कोई सी भी लाइन आप बना सकते हो, एंड देयर शुड बी infinitely many lines which can cut the square into 2 congruent parts. So that's why option D should be the correct answer. Next question, it is impossible to divide a square into which how many parts? लेकिन स्क्वायर पार्ट्स होने चाहिए। तो देखिए, एक स्क्वायर 4 पार्ट्स में तो बहुत इजीली आप डिवाइड कर पाते हो, ऐसा कुछ करके, राइट? 6 पार्ट्स में भी आइए डिवाइड, ऐसा करते हैं, राइट? सो वी आर एबल टू डिवाइड इट इनटू 6 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। 7 में भी कर पाऊंगा मैं, ऐसा, और इसको फर्दर डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, but it is impossible to divide a square into 5 parts जो कि खुद squares हो, okay? So that's why option B should be the correct answer. Next question, a number A is a number of the type 1, then 2 times 2, then 3 times 3, 4 times 4, and so on. 198th digit from the left क्या होगी? अभी देखते हैं। So basically 1 will be 1 time, 2 will be 2 times, 3 will be 3 times, 4 will be 4 times, similarly 9 will be 9 times. ये कितनी डिजिट्स हो गई? अगर इन सब का समेशन करना है, so there is a formula called n into n plus 1 by 2, तो 9 into 10 by 2, तो मतलब 45 डिजिट्स तक 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 and so on 9 9 9 9 टाइम्स आपको मिलता रहेगा। अभी 45, उसके बाद ना जो सारी डिजिट्स आएगी, फॉर एग्जाम्पल 11
11 टाइम्स आएगा, मतलब 22 डिजिट्स लेकर आएगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है ना। अगर 11 को 11 टाइम्स लिखूंगा तो 2 डिजिट एक टाइम में, मतलब 22 टाइम्स। सो बेसिकली 11 में 22 डिजिट्स आएगी, 12 में 12 टाइम्स आएगा और 2 डिजिट लेकर आएगा, तो 24 टाइम्स आएगा। 13 टाइम्स आएगा और 2 डिजिट लेकर आएगा, मतलब 26। 14 28 टाइम्स आएगा। 15 30 टाइम्स आएगा। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू 26, बेसिकली 26 इंटू 5 आप डायरेक्टली कर लो, 5 6 30, 5 2 10, 130 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये 130 टाइम्स, मतलब 130 एंड 45 विच इज इक्वल टू 175, मतलब 175 तक तो मैं पहुंच गया। ओके, 175 तक मैं पहुंच गया और 15 तक खत्म हो चुका है। अब 16 की बारी आती है। अब यहां लिखते हैं 16 16 16 16 16, 16 टाइम्स आएगा ये, ऐसा करते जाते हैं। तो 175, 176, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98। तो 198th डिजिट क्या होगी? इट शुड बी इक्वल टू 1, जो कि 16 का बार बार रेकरेंस की वजह से आया। Okay, so option A should be the correct answer. And our next question, you have got a compass and a straight edge. Each time you use compass, you have to pay 20 rupees. Compass use करते हो जैसे ही तो आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं, और रूलर यूज करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? 1 रुपए। Right? If you want to draw, if you have 1000 rupees to spend, what is the maximum number of pairs of perpendicular lines you can construct? अभी देखिए, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परपेंडिकुलर पेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन जिसका आपने 1 रुपया दिया। देन यहां पर एट दिस पॉइंट यू विल प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास, और एक आर्क यहां लगाओगे, फिर दूसरा आर्क यहां लगाओगे, फिर यहां पर कंपास का नीडल रखोगे एंड यू विल अप्लाई 1 आर्क हियर एंड अनदर आर्क हियर। सो कितने आर्क लगाए? देयर आर 4 आर्क्स, मतलब 4 बार अकरेंस हुआ कंपास का, मतलब 1 2 3 4, देयर आर 4 टाइम्स यू हैव यूज्ड अ कंपास। और आखिर में आप रूलर का यूज करोगे, राइट? तो 2 बार तो मेरा रूलर यूज हुआ और 4 बार कंपास यूज हुआ, मतलब टू ड्रॉ 1 पेयर आई एम एबल टू ड्रॉ 1 पेयर, मुझे क्या 2 रुपए यहां खर्च करने पड़ेंगे और 80 रुपीज यहां खर्च करने पड़ेंगे। करेक्ट है? तो 80 प्लस 2, अगर मुझे बेसिकली इफ आई वांट टू ड्रॉ, तो मुझे 82 रुपीज पर परपेंडिकुलर लाइन का पेयर ड्रॉ करने के लिए आई हैव टू स्पेंड 82 रुपीज। टोटल आई हैव 1000 रुपीज, तो 1000 डिवाइडेड बाय 82, इट इज 12 पॉइंट समथिंग, मतलब a total of 12 lines I am able to make with the help of 1000 rupees. Okay, next question. So 6 to 4, then 12 is coded as 6, 18 as 6, 24 as 8, 30 as 8, 36 as 9. ये basically 6 के total number of factors are 4, 12 के total number of factors are 6, 18 के भी 6 होते हैं, 24 के 8 होते हैं, 30 के 8 होते हैं, सिमिलरली 36 के 9 फैक्टर्स होते हैं। 36 का एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 या फिर 9 इंटू 4, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अभी इनमें +1 3, इसमें +1 3, मतलब देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 9। अगर आपको नहीं आता तो आई एक्सप्लेन इट वंस कि 42 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो 14 इंटू 3 42, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइज द गिवन नंबर, जो भी प्राइम फैक्टर्स के पावर होंगे उनमें 1 ऐड कर दो, मतलब 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2 एंड मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम व्हिच इज इक्वल टू 8। सो 42 विल बी कोडेड एज 8, सो ऑप्शन C should be the correct answer. And 13 is coded as 5. Last question, 13 is coded as 5, 17 is also coded as 5, 29 is coded as 7, 41 is coded as 11. अगर मैं 13 की बात करूं, it should be basically it should be 2 square plus 3 square,
This is 2 plus 3. Similarly, 17 is 1 square plus 4 square. This is 1 plus 4. 29, 2 square plus 5 square. This is 2 plus 5. And 41 is 4 square plus 4 square plus 3 square. This is 4 plus 4 plus 3. Similarly, if I talk about 73, it is 8 square plus 3 square. So it should be coded as 8 plus 3, which is equal to 11, and 11 should have been the correct answer. So this was the last question of NTSE last year mental ability phase 2 paper. Although we have skipped a few questions because there were some discrepancy in those questions, and this could be a possibility that in the main exam you'll come across such question where the question is not correct or is not framed properly or the options are not matching. So just make sure कि बहुत ज़्यादा उसमें time waste ना करें. Now, like, share and subscribe to our channel to get access to amazing content, and I'll be back with another video. Till then, stay safe and bye-bye.